Good morning, greetings of peace and Om Shanti. I would like to welcome you all to Jagdamba Bhawan, which is a meditation and a retreat center. We are all gathered here for a very special program that is arranged by the medical wing of Brahma Kumaris and the Indian Medical Association Pune. And I'm sure that when you leave this place, you will be filled with a lot of positivity and peace in your hearts. May I know how many of you are visiting here for the first time? Oh wow, so there's quite a lot that here for the first time. Right, so without any further delay, I would like to invite our guest. So let's invite our guest to the stage. We have with us Dr. Meenakshi Deshpande, who is the Honorable President of Indian Medical Association Pune. Let's give a big round of applause. We have Dr. Alka Sri Sagar, who is Honorable Secretary of IMA Pune. We have Dr. Manoj Matnani, a consultant pediatric nephrologist. We have Dr. Sachin Parab, a medical advisor and a corporate trainer. He will be here shortly with us. We have P.K. Sunanda Banji, who is Director of Brahma Kumaris Jagdamba Bhawan. We have with us B.K. Dashrath Bhaiji, who is a Senior Rajyogi of Jagdamba Bhawan. And we have Sister Sarita, who is a Rajyoga teacher and a motivational speaker. Let's all give us a big round of applause to our guest. And really want to thank you all for taking some time out from your busy schedule to come here for this event. So we will have few moments of remembrance of Supreme, and then we will continue the further program. Let's have few minutes of remembrance. So now I would like to request our respected sisters to come to the stage
and welcome our guest. So I request Gayatri Benji to come and give tilak to our guest. I invite Sheetal Didi to come to the stage and greet our guest with plants. Even though we all just welcoming the stage guest, but just feel that you are also being welcomed at the same time with a tilak and we would request our sisters to bring the gift, and our sister Sunanda Benji will give gift to our special guest, Dr. Meenakshi Deshpande and Dr. Alka Srisagar. I'm sure that when you would have come here, you would have felt the silence of this place. So let us give a big round of applause. And now our guest will give gift to Dr. Manoj Matnani, Dr. Sachin Parab, and Sister Sarita. Yes. From Indian Medical Association Pune, our president Dr. Meenakshi Deshpande will be felicitating Sunanda Didi. First, Dr. Manoj Matnani, Dr. Sachin Parab. yeah, Dr. Sachin Parab, Sister Sarita. Yeah. And now Dr. Meenakshi Deshpande will welcome Dr. Manoj Matnani. With a beautiful book. And now we have Dr. Sachin Parab
who is being greeted. And now we have Dashrath Bhaiji. And now we will have Dr. Meenakshi giving to the so there is a very sweet chit chat between. So we have Sister Sunanda Didi. So that was a very sweet welcome among them. Moving further, now I would like to invite Dr. Meenakshi Deshpande. But before I invite, I'll just give a little bio of her. Dr. Meenakshi Deshpande is an MBBS MD from BJGMC and SGH, Senior Consulting Obstetrician Gynecologist, practicing since 28 years as high-risk pregnancy consultant, Director at Vatsalya Hospital, Singhad Road. She is a consultant at Krishna Hospital, Poud Road. She is a president at IMA Pune, chairperson IMA Pune Medical Legal and AMS Committee. She is a member of IMA National Standing Committee of Initiative for Safe Motherhood. Recipient of many awards, IMA Indian Medical Association Headquarter, Dr. Kanak Goyal Award for Exemplary Work in Women's Health and Family Planning, Apolki Award for Work in Women's Social Issues for consecutive 2 years, IMA National and Maharashtra State President's Appreciation Award for 2 consecutive years, Rotary Award for Outstanding Work, Social Outstanding Work, and she's a master training for Folksy. I mean, I could go on and on, but that's how she is. So I invite Dr. Meenakshi Deshpande. Yeah. So thank you so much. Initially, Om Shanti, because after meeting Brahma Kumaris, now I have also started greeting all the doctors with Om Shanti. And first of all, I would like to thank the Brahma Kumari, first Dr. Sushma Lad, who initiated this thought process that doctors should be associated with Brahma Kumaris, because we have got a medical wing of Brahma Kumaris which is very active. And the next indication or stimulus came on our World Hypertension Day, which we had celebrated on, or we had observed on 17th of May. And during that time, when we found out that more than 20% of the doctors and the patients who were non-hypertensive were seen to be hypertensive, because that day we had taken out a fatwa, you can say, a connection to all the hospital owners, clinicians, saying that you do a free BP checkup of whoever non-hypertensive persons who come to your OPD. And during such cases, we found out that nearly 20% of non-hypertensive patients were found to be of BP more than 150/90, 140/90, somewhere even 180 to by 110. And they were not taking any treatment. And when we interviewed some people from that category who were not under any treatment and still they were hypertensive, they told me, "Madam, बहुत stress है. Madam, I cannot sleep for 2 to 3 days at a stretch." And then later on, they told me ki maybe I would like to go in for treatment, but I have got no time to go and check my BP every week. Or because you have shown us the way, maybe now we will go to our medical consultants. And so that, sometimes made me think ki we should have some enlightening medical discourses from Brahma Kumaris. If they were so much eager to have it with us, why shouldn't we also
communicate with them and have a good discourse session in such a way that many doctors come under this stress relieving procedures. Whatever they will be teaching us will be all stress relieving, especially for medical minds, because medical minds think alike and they think differently than other normal population, because they have got many things to worry. They worry about their patients, they worry about their relatives, they worry about their hospital staff, but they don't worry about themselves. And I think that is the main, what you can say, stimulus which made us do this medical course of enlightening or manashanti for doctors, their relatives, staff, whoever are doing patient care. And I think all the speakers are also directing their thoughts towards in the same manner. And I would really thank Brahma Kumari, Sheetal Ben, Sarita Didi, and all our speakers who are there today, who have come specially to indicate us, direct us, guide us, be our philosopher, and direct us to such an era that we come to our own calming of the minds by ourselves. And we should, as doctors, not only look after the health and care of the society, but remember that we also are a form of a society and we should take care of ourselves also. So saying these words, I will just tell a few words about IMA. Indian Medical Association is a allopathic doctors association, which we are having more than 5,200 members now. And we are most active and the largest branch in not only in IMA Maharashtra state, but third active in IMA national. So we are the biggest, largest, vibrant, active branch, and we are coming with many programs, and stay tuned for many more programs in the following years after the corona pandemic is over. And yes, allopathic doctors बहुत बदनाम हैं, लेकिन we are doing our best to bring the badnami back, or trying to make our stand very clear as to what the allopathic can do and what the allopathic cannot do. So, of course, allopathic cannot give you a manashanti, so we are associating with Brahma Kumaris for that. So, thank you so much, and I would now request the next person to take over. Thank you, Meenakshi Deshpande, for sharing and initiating such a great work for doctors. So moving ahead, now we will have inauguration of today's program with lighting candles. So I request all the guests to come to the front. So I request all the dignitaries on the dais to please come forward for the candle lighting. And I request, okay. And I request everyone to stand and be part of this candle lighting. We would also like the guest Anuradha Nagarakar, consultant Chem, to please come on the stage to be part of candle lighting. Anuradha Nagarkar, Vinayak Matsal, which is director Matsal Hospital, Swarup Pawar, which is surgeon from Sasun Hospital, and we have Pushpa Pawar, Sushma Lad, we have Pushpa Pawar, to please come on the stage and be part of the candle lighting. Okay, so I would like Anuradha Nagarkar to please come on the stage, Vinayak Matsal, Swarup Pawar and Pushpa Pawar to please come on the stage. Along with lighting the candles, let us ignite the lamp of soul consciousness. And we will have 5 minutes of meditation and spread the powerful vibrations to the world. I will guide you through some words for you to follow during the meditation. So we all stand at our own place for the next few minutes
and spread positive vibrations to the world. Let me go on an inward journey. Going within, I come to the awareness of the eternal being, that I am a being of light, radiating light in the center of the forehead. I allow myself to feel the separate eternal identity that I am, and this physical body is my costume, an instrument designed by nature to give me all the access that I need to communicate with the world out there. I connect with the store of peace that I hold within myself. I let my thoughts slow down and choose the one thought of peace. I am a being of light. I am a being of peace. And I connect to the One Supreme. I make the connection. I feel the warmth, the love, and the joy. It is the light of love, the light of purity, the light of truth. And this is my protection. Wherever I go, I carry this protection with myself. And staying at home allows me to strengthen this connection. And I extend that protection out to all those around me. And it reaches out even further and extend across the entire planet, so that the entire human family, all forms of light, and nature itself experiences the safety and protection. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। We all can take a seat. Whatever we give, we get. So whatever vibrations we send out to the world, we receive it back. So now I would like to invite Sister Sarita, and before BA in HR and DBM in Value Education and Spirituality. She is a coach and a motivational speaker.
She has been instrument for Mind Body Medicine Conference in Pune. She's a member of medical wing of Brahma Kumaris. So now I invite Sister Sarita to come and give a short introduction of Brahma Kumaris and the medical wing of Brahma Kumaris. Sister Sarita. Om Shanti and good morning. Medical health field. It is that type of field which is most of the times surrounded by negative energy, the energy of fear, anxiety, dream of our respected Dadi Janki Ji. So we welcome all of you, especially to experience the vibrations of this place and the spiritual talks by all experienced yogis. It is said that health is gained not only by eating, but it is gained by what you see and what you think. So, here, Prajapita Brahma Kumaris, this is a spiritual organization which really teaches us and which has been working through 149 countries through its 8,000 centers. And you all must be knowing Prajapita Brahma Kumaris. It is a spiritual organization working on an international level, and its headquarters is situated at Mount Abu, Rajasthan. Let me tell you, Brahma Kumaris is not a religious organization. It is spiritual, and spiritual means it gives us knowledge of our real spirit, values, virtues, silence, meditation, positive thinking, stress management, peace of mind, and as well as spirituality in healthcare also. So Brahma Kumaris has been working through its 28 wings, like business industry and medical wing and so many wings. But one of them is medical wing. And this medical wing, it is a very, what you can say, this wing is specially working under Raj Yoga Education and Research Center. And this medical wing, it is what we can say 37 years it has been working, and of course, this has many beautiful projects. One of them is CAD, coronary artery disease. Many times whenever there are blockage, we just say, oh, go for angioplasty, go for bypass. But here, CAD project, and this CAD project is run by Dr. Satish Gupta. And since so many years, so many doctors all around the world, scientists, they have been joining this camp of positive, healthy lifestyle. And of course, within 7 days, they get the results. We have another project which is called as Cancer Project, and our very renowned and respected Dr. Ashok Mehta, he's in charge of that project. Yes, My India, Healthy India medical wing is running this project, as well as Tobacco-Free India, Addiction-Free India. And I'm very happy to announce, to mention that the pioneer of this project is our doctor brother, Dr. Sachin Parab. He is here, so please welcome him. डॉक्टर सचिन भाई पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में जाकर उसके लिए
इतना काम कर रहे हैं व्यसन मुक्ति के लिए, टोबैको मुक्ति के लिए। कई सारे अवार्ड्स कई सारे राज्यों ने उनको दिए हैं, गवर्नमेंट ने दिए हैं, और यस, इस प्रकार से वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ डिवाइन मदर बेबी प्रोजेक्ट है, और ये मदर बेबी प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर। डॉक्टर शुभदा नील, शी इज़ प्रेसिडेंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। हमारे पास और एक अच्छा प्रोजेक्ट है जब हम वैल्यूज़ की बात करते हैं। सो देयर इज़ वन प्रोजेक्ट विच इज़ कॉल्ड एज वैल्यूज़ इन हेल्थ केयर। कई बार हम देखते हैं कि कई सारे हॉस्पिटल्स पर अटैक होते हैं, कई बार कुछ ऐसे नाम आ जाते हैं न्यूज़ में, and sometimes we feel that there is some type of missing link. And what is that missing link? Sometimes it might be communication link, sometimes it might be lack of values. Vihasa, वैल्यूज़ इन हेल्थ केयर, यह इस टाइप का प्रोजेक्ट है कि जिस प्रोजेक्ट में बहुत सुंदर तरीके से 8 टाइप ऑफ मॉड्यूल्स के वर्कशॉप्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होती है। और यस, विहासा के बाद तो आप देखेंगे कि सचमुच एक टोटल पर्सनालिटी हमारी चेंज होती है। वापस मुझे ये कहने में बहुत खुशी होंगी, विहासा के जो पायोनियर हैं, और विहासा स्पेशली ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत एक्टिवली जो विशेष रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे वापस 2 एंजल डॉक्टर्स हमारे बीच में हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं, डॉक्टर मनोज मदनानी एंड डॉक्टर सचिन परब। हमेशा आप देखेंगे पूरे इंडिया के कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज में, कोई ना कोई हॉस्पिटल में आप हमेशा विहासा के प्रोग्राम्स देते रहते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा कुमारीज़ का मेडिकल विंग बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रहा है। सिर्फ इसमें नहीं, डायबिटीज़ में भी, मैडम ने जस्ट अभी कहा ब्लड प्रेशर, यस, तो इन सभी बातों में अच्छी तरह से कार्य कर रहा है। और इसके लिए माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में अगर आपको याद होगा कि किरण रिजिजू जो हेल्थ मिनिस्टर थे जिस समय, वो स्पेशली माउंट आबू पधारे थे, और जैसे वो माउंट आबू उस मेडिकल कॉन्फ्रेंस में आए और उन्होंने वहाँ का वातावरण देखा, वो स्पिरिचुअल एटमॉस्फियर, स्पिरिचुअल टॉक सुने, उन्होंने कहा मैं अभी के अभी जाकर गवर्नमेंट को ये कहता हूँ सब जगह पर कि यस, इस टाइप के प्रोग्राम आप आपके शहरों में ले, ताकि हमारे डॉक्टर्स को, मेडिकल हेल्थ वर्कर्स को इसका बहुत बहुत फ़ायदा हो। और सचमुच आज माइंड बॉडी मेडिसिन कई सारी कॉन्फ्रेंसेस पूरे ऑल ओवर इंडिया में चल रही है। इसके साथ हज़ारों डॉक्टर्स जुटे हुए हैं, और इसी एक कॉन्फ्रेंस में, माइंड बॉडी मेडिसिन की कॉन्फ्रेंस में आज आप सभी को इनवाइट किया गया है। नो डाउट आज के इस कॉन्फ्रेंस में कोई टेक्निकल टॉक्स नहीं होंगे। हाँ, यहाँ कोई स्पेशलिस्ट जो टेक्निकल के हैं उनके टॉक नहीं होंगे, लेकिन आज आप जो सुनने चाह रहे हैं, जो ऑलरेडी, जैसे हम कहेंगे कि वो मेडिकल फील्ड में है लेकिन दे आर स्पिरिचुअल डॉक्टर्स, और जो रूहानी डॉक्टर्स है, स्पिरिचुअल डॉक्टर्स है, जो हमारे मन को ठीक करते हैं, ऐसे मन को शांति देते हैं, मन को सुकून देते हैं, एक होप देते हैं, ऐसे योगीज आज हमारे बीच में बैठे हैं। वन ऑफ द योगीज इज़ अवर रिस्पेक्टेड सुनंदा दीदी जी। आप जब इनको सुनेंगे तो यू विल फील द वाइब्रेशंस ऑफ पीस, द वाइब्रेशंस ऑफ सीरेनिटी। और एक योगी बैठे हैं हमारे रिस्पेक्टेड दशरथ भाई जी। आप जब उनको भी सुनेंगे तो आप उस टाइप के स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस का बहुत सुंदर अनुभव करेंगे। तो इस प्रकार ब्रह्मा कुमारीज़ बहुत अच्छा कार्य कर रही है गवर्नमेंट के साथ मिलकर। एट प्रेजेंट मेडिकल विंग का और एक कार्य चल रहा है, जगह जगह ऑल इंडिया लेवल पर जिन डॉक्टर्स ने विशेष रूप से कोविड में काम किया है, डॉक्टर्स एंड नर्सेस, उनका वो जगह जगह जाकर सम्मान कर रहे हैं। और ये इतनी अच्छी बात है कि उस कारण से कई सारे, जैसे वो दे आर फीलिंग वेरी हाईली रिस्पेक्टेड एंड वेरी हाईली ऑनर्ड। तो ब्रह्मा कुमारी विंग, ब्रह्मा कुमारीज़ मेडिकल विंग बहुत अच्छी तरह से डॉक्टरों को स्पेशली ये फील करके देना चाहता है कि यस, आप दवा के साथ साथ पेशेंट को दुआ भी दीजिए और साथ साथ दुआ भी लीजिए। आप कितने भी बिजी डॉक्टर्स हो, लेकिन आप हमेशा इजी रह सकते हो।
आपकी प्रैक्टिस में आप होलिस्टिक अप्रोच लाकर आप भी स्ट्रेस फ्री लाइफ का अनुभव कर सकते हो। तो इसी के साथ आज ब्रह्मा कुमारीज आप सबका स्वागत करती है और विशेष जगदम्बा भवन आप सबका स्वागत करता है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। Thank you, Sister Sarita, for sharing valuable information and also introducing the BKs and the medical wing of Brahma Kumaris. So, अभी छोटी सी 2 अनाउंसमेंट है। अगर किसी को पानी पीना है तो मेरी राइट हैंड साइड में गेट से बाहर आप जाएंगे, स्ट्रेट राइट हैंड साइड पे पानी की सुविधाएं हैं। और वॉशरूम यूज़ करना है तो लेफ़्ट हैंड साइड के डोर से, वहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड में वॉशरूम्स हैं। सो मूविंग फर्दर, एक और छोटा सा अनाउंसमेंट है, क्योंकि आप सब बहुत अपना वैल्यूबल टाइम लेके यहाँ आए हैं और हम चाहते हैं कि पूरा कार्यक्रम हम टाइम पे पूरा करें। तो जस्ट स्पीकर्स के लिए आपको एक थोड़ा सा बेल सुनाई देगा जो 2 मिनट पहले जब आपका टाइम पूरा होने का होगा, तो वो थोड़ा सा सिग्नल होगा, दिस इज़ अ वेरी स्वीट एंड जेंटल रिमाइंडर कि यू आर क्लोज टू योर टाइम। तो बस हम चाहते हैं कि सब टाइम का सही से उपयोग हो। तो अभी नेक्स्ट स्पीकर जो हमारे हैं वो है सुनंदा बहन जी, और मैं उनका थोड़ा इंट्रोडक्शन देती हूँ। तो रिस्पेक्टेड राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सुनंदा दीदी is the director of Kolhapur Seva Kendra. She is also in charge of Pune Meera Society subzone of Brahma Kumaris. She is the chief director of Jagdamba Bhawan Retreat Center. She is also the national coordinator of the Rural Development Board of Brahma Kumaris. Till date, Didi has been honored with many awards. These include the Durga Award, along with the Jeevan Gaurav Award. The district level de-addiction award has also been given by the Jila Parisad Kolhapur. And Didi will share more on the topic for doctors' contribution for Swarnim Bharat. एंड एक और चीज़ जो मैं ऐड करना चाहती हूँ दीदी के लिए, जैसे सरिता बहन ने भी बोला, तो आई थिंक द स्पेशलिटी इनकी एक ये है कि आप कैसे भी हलचल में होंगे, उनके सामने आएंगे तो ऑटोमेटिक एक्सपीरियंस किया है कि बिल्कुल आप भी शांत हो जाएंगे। इतना मतलब मेडिटेशन का इतना इम्पैक्ट होता है। तो सुनंदा दीदी। ओम शांति। जो सारा परिचय दिया उसमें जो मेन रोल है वो मेडिटेशन का है, और मेडिटेशन सिखाने वाला ऑलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा का है। यही चीज़ आप सभी भी करें, क्योंकि आज के इस छोटे से प्रोग्राम में पधारे हुए हमारे अति आदरणीय, जिनके नाम में ही देश समाया हुआ है, वो हमारी आदरणीय देशपांडे बहन जी, जिनके नाम में सागर समाया हुआ है, वो हमारी अति आदरणीय क्षीर सागर बहन जी, जिनके अंदर सत्यता का वैल्यू समाया हुआ है। इसलिए मैंने खुद ही देखा सचिन भाई को ज्ञान में कैसे आए और आगे आज कितना बढ़ गए हैं। वो हमारे डॉक्टर सचिन भाई, जिनके नाम में मौज का वैल्यू है, वो हमारे विशेष भाई मनोज भाई और अति आदरणीय दशरथ भाई जी, जो पिछले 50 साल से भी अधिक इस ज्ञान में है
और आप सभी डॉक्टर्स के लिए क्या कहेंगे? डॉक्टर माना नेक्स्ट टू गॉड, इसलिए नमस्ते है सबको। और डॉक्टर माना एक विशेष परिवार का सदस्य होता है। जैसे व्यक्ति को माता पिता भाई बहन होते, ऐसे डॉक्टर भी एक परिवार का खास सदस्य होता है। पेशेंट अपने घर वालों को कुछ नहीं बताता है, लेकिन सब कुछ डॉक्टर को बताता है। डॉक्टर माना सबका दुख मिटाने वाले, सुख देने वाले, सबके मन को रिलैक्स करने वाले। डॉक्टर जब कहता है तुमको कुछ नहीं हुआ है, तो बड़ी बीमारी भी पेशेंट को लगता कुछ नहीं हुआ है। तो ऐसे आप सभी अति आदरणीय अतिथि के रूप में प्रोग्राम को अटेंड करने के रूप में पधारे हुए सभी डॉक्टर्स भाई बहनें, साथ ही साथ हम सबको जोड़ने वाली हमारी मीठी बहन सुषमा बहन, डॉक्टर सुषमा लाड, एक प्रोग्राम में यहाँ आए थे और उन्होंने कहा कि बहन जी ऐसा प्रोग्राम करना है। फिर हमारी आदरणीय देशपांडे बहन जी ने तुरंत उसको स्वीकारा और आज का ये प्रोग्राम होने जा रहा है। हम सभी मिलकर के ब्रह्मा कुमारीज क्या कर रही है? आज़ादी के 75 साल हम सभी मना रहे हैं और ब्रह्मा कुमारीज पिछले 80 से अधिक साल से इस धरा को स्वर्णिम, इस धरा को समृद्ध, इस विश्व को फिर से वो सतयुगी दैवी राज्य बनाने का प्रैक्टिकल काम ये ब्रह्मा कुमारी कर रही है। यहाँ आए हुए हर इंसान को पहले अच्छा इंसान बनाया जाता है, फिर आगे उसे लक्ष्य दिया जाता है कि अनेक दैवी गुणों को धारण कर तुम एक बेहतर विश्व निर्माण करने के लिए मददगार बनो। और लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं। आज आप सभी मेडिकल क्षेत्र के लोग आए हुए हैं। आपने कोरोना पीरियड में इतनी सेवा की है, आपके त्याग के लिए हम क्या कहें। खुद का जीवन भी खतरे में डाल करके पेशेंट की सेवा करना ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। बहुत दिन से था कि आप सभी को यहाँ बुला करके अच्छा कुछ करे, वो दिन आज आ गया है। साथ ही साथ आपकी तपस्या भी बहुत है, क्योंकि एक जगह पर रह करके दिन रात पेशेंट्स को मिलना, उनको देखना, उनको सुनना, उनको ठीक करना एक तपस्या होती है। और सेवा के लिए क्या कहे, डॉक्टर मना 24 आवर ऑन सर्विस। तो ऐसे आप सभी आए हुए डॉक्टर, जो स्थान है हमारा जगदम्बा भवन या कहो ब्रह्मा कुमारी, इसका कोई भी स्थान, वो है परमात्मा ने निर्माण किया हुआ स्थान, जिसको डॉक्टर भी क्या कहते हैं, अभी भगवान के हाथ में है। तो ये भगवान का स्थान है। यहाँ पर आप सभी नेक्स्ट टू भगवान आए हुए हैं, इसलिए हम सभी को बहुत खुशी है। आप सभी को भी बेहतर विश्व निर्माण करने में मददगार बनना है। कैसे बनेंगे? आपका नाम ही है डॉक्टर। डॉक्टर में एक आता है डॉट। अगर आप 3 डॉट सीख जाएंगे तो आप बेहतर विश्व निर्माण करने में सहयोगी बनेंगे। पहला डॉट है मैं स्वयं एक चेतना हूँ,
शरीर को चलाने वाली, इधर है वो पॉइंट, और उसमें है शांति। डॉट समझेंगे तो क्या है, बहुत शांति फील करेंगे, आनंद फील करेंगे, पावर फील करेंगे, पॉजिटिविटी ऑटोमेटिक आएगी। दूसरा डॉट है परमात्मा। भगवान के लिए क्या कहते हैं, गॉड इज लाइट, ज्योति बिंदु है भगवान, जिसका नाम है शिव। उसको भी याद रखेंगे तो परमात्मा से 3 बातें प्राप्त होती है, हम लाखों लोग अनुभव कर रहे हैं। एक है वैल्यूज, क्योंकि भगवान को दिव्य गुणों का स्रोत कहा जाता है। ऐसे ही पावर, पॉजिटिव पावर, क्योंकि परमात्मा को शक्तियों का भी स्रोत बोला जाता है। और साथ ही साथ सत्य ज्ञान, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला ज्ञान। तो ये 3 बातें प्राप्त होती है, और ये 3 बातें हम भगवान से लेते हैं तो जैसे बेहतर विश्व निर्माण करने में मददगार बनते हैं। और तीसरा डॉट है जो हुआ ओके, बीती को बिंदी लगाओ, बीती को चितवो नहीं। कई सारे लोग इसी कारण बीमार है, पुरानी बातें बहुत याद रखते हैं, जो निगेटिव उनके जीवन में बीती हुई है, छोड़ते ही नहीं है। मेरे से आपको ज़्यादा मालूम है। तो ये तीसरा डॉट, जो हुआ कोई बात नहीं, अच्छा हुआ मेरे लिए, प्रैक्टिकल करके देखना। तो इससे क्या होता है, अच्छा दिन बीतता है, अच्छे संबंध बन जाते हैं, अच्छी बातों पर अंदर चिंतन चलता है। तो डॉक्टर में एक आता है डॉट, दूसरा आता है एक्टर। आप सभी दुनिया के हीरो एक्टर है ना, क्योंकि अब बिना डॉक्टर कुछ नहीं चलता है। हम प्रैक्टिकल देखते हैं, हम किसी का परिचय करके देते ना, ये हमारे बीके भाई है, ये डॉक्टर है, तो झट से सामने वाले का रिस्पेक्ट उसके प्रति बढ़ जाता है। तो एक्टर माना अलर्ट, एक्टिव। तो बेहतर विश्व निर्माण करने में हमको अलर्ट रहना है और एक्टिव रहना है, मन वचन कर्म से एक्टिव। और अलर्ट किस बात में, सुजाग। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, लेकिन एक संकल्प दे देती हूँ। इतना कुछ मेडिकल क्षेत्र प्रगत है, फिर भी बीमारियां क्यों बढ़ रही है, आप खुद चिंतन करना। या हमारे सचिन भाई आपको बताएंगे। तो हमें अलर्ट किस में रहना है, मन वचन कर्म से हम अधिक से अधिक सभी को सुख दे, अधिक से अधिक मन वचन कर्म से अच्छा बनने में सहयोग दे। अगर हमारे एक्टिंग में ये बातें हम लाते हैं तो हम बेहतर विश्व बनाने में बड़े मददगार बनते हैं। तो मैं आप सभी भाई बहनों के लिए, विशेषम आदरणीय देशपांडे बहन जी, क्षीरसागर बहन जी, सुषमा बहन जी, त्रिमूर्ति बहनों का तालियों से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इतना सारा मौका हम लोगों को दिया। और आप सभी डॉक्टर्स को यही शुभ भावना देती हूँ, आप सभी मेडिसिन के साथ साथ, मेडिकल होने के साथ साथ मेडिटेशन ज़रूर करो। कितना टाइम,
10 मिनट 15 मिनट। और मेडिटेशन के द्वारा मेडिटेशन और मेडिसिन दोनों का बैलेंस रखते हुए आप सभी पेशेंट को ठीक भी करेंगे। और कहा जाता है जब मेडिटेशन और मेडिसिन का हम बैलेंस रखते हैं तो बैलेंस ब्लेसिंग दिलाता है, और ब्लेसिंग जब हमारे जीवन में आती रहती है तो हमारा जीवन ब्लिसफुल बन जाता है। तो ऐसे सुंदर जीवन का आप सभी खुद भी अनुभव करें और आपके एक एक वाक्य पर पेशेंट विश्वास रखता है और पेशेंट को भी ऐसा बनाए। यही शुभ भावना। ओम शांति। थैंक यू सुनंदा दीदी ना, बहुत इनकी स्पेशलिटी है कि वर्ड्स के साथ कैसे प्ले करते हैं, और बहुत अच्छी डेफिनेशन बताई, डॉक्टर्स मना दुख दूर करने वाले। और दूसरा डेफिनेशन जो दिया, नेक्स्ट टू गॉड। और जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताई वो था कि 3 डॉट ना, डॉक्टर में 2 शब्द है, डॉट और एक्टर। तो थैंक यू सुनंदा दीदी, इतना अच्छे से आपने सबको इंस्पिरेशन दिया। तो मे बी बिफोर हम मूव ऑन हुए नेक्स्ट स्पीकर के लिए, बहुत अच्छी प्रैक्टिस जो एक कर सकते हैं हम कि एक संकल्प लेते हैं अभी, क्योंकि डॉट का इम्पोर्टेंस बताया कि जो पास्ट का जो भी हुआ वो पास्ट। तो ऐसी कोई भी चीज़ आपकी मन की स्क्रीन पे अभी कोई आ रही है जो बॉदर कर रही है आपको, तो उस चीज़ को लेके आए अपनी मन की स्क्रीन पर, और आज इस चीज़ को हम यहाँ पे ही फुल स्टॉप लगा के जाएंगे इस डोर के बाहर। तो 1 मिनट का हम लोग संकल्प सोचो कि कौन सी चीज़ है जो आपको बॉदर कर रही है। तो विल टेक 1 मिनट ऑफ साइलेंस। ओम शांति। तो पक्का संकल्प करके हम इस डोर के बाहर जाएंगे कि वो चीज़ आज यहाँ पे ही ख़त्म। So moving forward, I would like to invite Dr. Alka Shirsagar, who is the Honorable Secretary of IMA Pune, who will greet us. Greetings from IMA Pune. Just now our President Madam has told you about the Indian Medical Association, and all our doctors, they know Indian Medical Association, how it helps all our doctors to practice in a better way and treat our patients. So here is the one more chance for all the doctors to get involved in such a nice program on mindset and rejuvenating our medical minds. So unless we are not peaceful from inside, we cannot treat our patients, because to think of a patient's disease, think of patient's condition, we require a time, we require thoughts. So to complete all that, this program will really benefit all of us to have a more excellent practice in future. So with this, I will request our madam, and I think for all of us, we will be arranging more and more such workshops for this rejuvenating our medical minds.
So just now madam has told about medicine and mind. So these are the two things which will be treating the patient. So the mind has to be quiet, because we say adhyatma. Adhyatma means Adi Atma. Madam has told about Atma, Paramatma. So to go to Paramatma, we require some meditation. And Adi Atma. A means Atta pasun, and Di means Buddhi. So Buddhi pasun, when you study Atma, that is Adhyatma, that is spirituality. So I think I really congratulate all Brahma Kumaris, madam, and they are all the events they are arranging for not only for the doctors but all the disease patients also. I really appreciate Dr. Matnani and Dr. Parab sir. They are taking a great effort in rejuvenating our patients' minds and to decrease the patient disease, because prevention is the first line of treating the patient. So for that we require such more and more activities. So rather than increasing hospitals, we should increase more and more these Jagdamba Bhawan branches all over Pune, Maharashtra, India and the world. So with these few words, I will take your permission. Om Shanti. थैंक यू डॉक्टर अलका. तो अभी हम राजयोग का जो हमारा फाउंडेशन कोर्स है ब्रह्मा कुमारीज का, वो हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं. तो उसकी फर्दर डिटेल्स मैं एंड में भी सुनाऊंगी. वैसे एक ऑनलाइन कल से भी ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट हो रहा है, बट इन हाउस भी प्रोग्राम्स हमारे हैं और इन हाउस कोर्स भी स्टार्ट होगा. तो फर्दर डिटेल्स मैं आपको एंड में बताती हूँ. So now I would like to invite our next speaker, which is Dr. Manoj Matnani, and I will give a short introduction of him. Dr. Manoj Matnani is a consultant pediatric nephrologist, completed MD in pediatrics from KEM Hospital, Pune, did IPNA fellowship from St. John's Medical College, Bangalore, did 3 years clinical fellowship in pediatric nephrology from Great Ormond Street Hospital, London, UK, and Royal Manchester Children's Hospital, Manchester. He is currently working at KEM Hospital, Jahangir Hospital, nephrologist Dinanath Mangeshkar Hospital in Pune and Bombay Hospital in Mumbai. Manages 2 pediatric nephrology clinics, one in Pimpri and other in Pune. Is a life member of the Indian Society of Pediatric Nephrology and the International Society of Nephrology. Spiritually, he is a regular godly student of Raj Yoga, Brahma Kumaris. Since 2008, he is an active life member of the medical wing of Brahma Kumaris since 2010. He is a Vihasa, which is Value in Healthcare, a spiritual approach coordinator, trainer and facilitator for Vihasa activities conducted in Mumbai and Pune. And he has done many lectures on Vihasa, de-addiction, stress management, self-management, time management. So he has many degrees and many workshops done. So Dr. Manoj Matnani will be telling us more about Vihasa. So basically Vihasa stands for Value in Healthcare, a spiritual approach. It's a personal and team development program specially designed for healthcare practitioners. Dr. Manoj Matnani. So good morning. आवाज नहीं आ रहा है.
Okay, so you are sitting, warming up your chairs since last almost 1 hour, I think. Yeah, 1 hour, 15 minutes. Do you have the list of the program? I don't think so, which is very good. Because you should know that we are running before time. So, जो before time होता है अच्छा लगता है ना? So, and before I start, let me know how many of you are doctors here. If you can please raise your hands so that I can know how many of you are from our profession. Okay, thank you. And before I start, let me thank immensely, as you all are hearing all the time, Supreme Soul, whose introduction will be given to you by Dr. Sachin Parab today. So I'm really in debt. All this credit goes to what we call Shiv Baba. We really approach him with the word Shiv Baba. And then you were seeing the seniors on the dais, Sunanda Didi ji, she was mentioning everyone's name with a twist. So let me tell her name. Twist in the sense she was trying to elaborate the definition. So Sunanda Didi herself also is an embodiment of Su and Anand, which means a lot of bliss. So there you are. And we had another very old gentleman sitting next to me, Dashrath Bhai. Here he is sitting on the second row now. His name also is not less, Dashrath. Rath means chariot and Dash means 10. So our body has these 10 sense organs through which we perceive. So he's got full control. He's a chariot and in full control of that. And that embodies his name. And others all were introduced very well in detail. And I think a few other names which I must definitely say first. Sushma Lad, thank you so much because I know her very well. I know many other people in the audience as well from my pediatric community, Dr. Dharap and Dr. Zawar. I don't know many others from you, but I'm sure we have met at some conferences. I know a few faces as well. And all thanks to the Jagdamba Bhavan Sevadharis who are working tirelessly in the background, whose names are not being taken at all. Don't worry, I'm not trying to do a vote of thanks now, but I'm just trying to acknowledge their presence. And most importantly, Dr. Deshpande and Dr. Shirsagar. A big thank you to both of you because you all have realized that, I'll take this. So you all have realized the importance of spirituality in professional lives. And I really congratulate you for taking this effort. And you can see that there are very less people. You can count on fingers. Doctors are around 25, 30, maybe a bit here and there. And the moment you came in the morning, you would feel, माहित नहीं कितनी कमी लोग हैं. So whenever we go to a jeweler's shop, how many are there? No comments. But if you go to a grocery store, there will be many. So you are those fortunate few who have found out so much of time for yourself. So a big round of applause for you all actually. You can clap for yourself. So I have been given this job in the next 45 minutes to tell you about what is Vihasa. It's all there in front of you. But I really don't believe in lectures. I want to interact with you all. I want to actually ask you a few questions and get some answers from you. And in the meantime, in the background, you will keep hearing a lot of songs in between. So don't feel, "Arey, he banda ka nahi karat." It is all something a part of our daily routine in spiritual Brahma Kumaris, what we say. That is what we call traffic control. On and off, it will go off. You would hear some Hindi songs. It is basically to check your state of mind and whether you can think positive. And if you can listen to those words which are there in the song, you can really try to concentrate on those. And also I would like to give a big thank to Dr. Sachin Parab, who's sitting in the corner right there, as if he is in the corner. But all thanks to him, because he is a very important member of the medical wing of Brahma Kumaris, which is organizing this program. And how can I forget Dr. Ashok Mehta, which I think Sarita's sister took his name. So I'll be showing you this entire program is because of his credit. This program is an international program, and he has got it to India. So without much ado further, let me go further. What is this program all about? This always happens. Sometimes this doesn't work, sometimes that doesn't. Yeah, sorry, it's my fault. But okay, is it from the side? Sorry, I'm doing it the wrong way. Yes. So see, I'm going to show you a few slides, but please don't get bothered. Go through the slides in detail. This is what is the entire agenda of the talk which I'm going to give you today. But what is Vihasa? By now you should know. I'll go back again. What is Vihasa?
values in healthcare, a spiritual approach. And I distinctly remember Dr. Deshpande telling that we are allopathic doctors and we really are not badnaam. It's okay, jo badnaam hota hai, unka bhi naam hota hai, I must say. But I think the IMA, she was trying to say IMA is full of allopathy doctors. I think that's the way it is. But let me tell you, both of us, Dr. Parab and me, also are allopathic doctors in one way. So allopathic doctors are trying to get this back, that yes, we are responsible for stress in life because of whatever reasons, and we are the ones who can manage our stress. Can we? Can we or can't we? We can. So let us look at what medical professionals can do. And I'll go through this journey with you all. It's an interesting journey. It's not a lecture. What are values? Anyone? Again, can they be taught or caught? Can I give you a lecture standing here on values and can you implement it from tomorrow? No, absolutely no. Very true. But can some motivational figure motivate you? Yes. And you can see that person and use those values, right? So they are definitely caught from someone, not taught. And what are the values which as medical professionals we always have? I think today you all have demonstrated that time discipline. All of you were there before time, and this program is also going before time. So discipline is there. What are the other values which we already show in our profession? You can please tell us. I want you all to come up with few answers. Yes, compassion, fantastic, fantastic value. Thank you. What else? What with the patient? Sympathy, yes, good. Patience, very good. As a doctor, we should have patience with our patients. Dedication, fantastic. So you feel we have all these values. Then why am I taking this for you all? Why are we taking this talk for you all? It is not to teach you about values you already know in detail, but over a period of time, we have lost valuing the self. Do you agree? Apni value rakhte hain hum? No. So how is this program inspired? Let me go further there. What are values? They are basically our innate qualities. When I say innate, all of you as medical professionals are aware, innate means we are born with those values. It is nothing to be acquired. It is already there in me. But over a period of time, if I haven't used that, I forget. And when I forget, it's a vicious cycle. I don't use it. The more I don't use it, I keep forgetting it. So let's start using it. All of you know that as medical professionals, we undergo a lot of stress in residency. All of you have gone through that. After residency, when we start practicing, when we come into patient interaction, again, there is a lot of stress due to many reasons. If I tell you to make down a list, there will be a big list. And all this culminates to a lot of things which we don't like, which I think Dr. Deshpande was trying to say. We are undergoing violence for doctors, right? We are going through that phase. Is anyone here who is a target of that? All of us are. But have you all directly been hit sometime? Not really, which is okay here, fine. Actually, it's not a good question to ask. But we should probably stick the finger back to us. What has happened in our profession which has led to this? Stress, so much of burnout we have. Then when someone comes and hits me, I completely lose self-esteem. Do I that time? That why is this person treating me like that? What wrong have I done? So all this causes a lot of turmoil inside. And at that point of time, can you sit and do meditation? Because that is the time when you need to take care of your mind particularly. Abhi to it's okay, it's 11:30 now, there is no stress in the atmosphere outside. And I'm giving a good lecture for you, nice air conditioning is going on. There'll be lunch served to you soon, everything is fine. I can sit and do meditation immediately. If I give you a few thoughts, you'll start flying. But when is it needed the most? That time we have to practice it. So these are all values, let me skip all this. Coming to issues which we see in newspapers on and off, that how junior residents flee the residency training program. You would have examples of those as well. Your friends would have done that. Why? Because of whatever I discussed so far. So
in our MBBS, Ayurvedic, etc., whichever allopathies we have this traditional training which teaches us all these things, theory, practicals, but somewhere we lose these things which are not taught to us. Again, as I told you, values are not taught, they are caught. If you remember your professors, your seniors in the organization where you have done your training, कोई ना कोई तो ऐसे होगा डॉक्टर जिसने आपको इंस्पायर किया होगा, आपका आइडल, आपका मेंटर, कोई ना कोई होगा. सो हम लोग डॉक्टर बनते हैं. You please ignore this. This is I don't know why it is doing that. Don't please fret with the organizers. Even they don't know why it's happening. So our entire training is you have to become a good doctor. A good doctor should have a few qualities. It should be a lot of compassion and calmness. I can really empathize with them because they would be feeling from inside that ऐसे क्यों हो रहा है, पहले कभी नहीं हुआ है, आज ही क्यों हो रहा है. And even I don't know why it is happening. I have done a few programs here before, it has never happened. Now let's see, this is the third one. What is happening inside when suddenly, if I'm giving a talk or if you're on the dais and this thing starts happening, what thought comes to your mind first? Distraction. Okay, you get irritated. क्यों ऐसे हो रहा है? Why? Why it's for me? That is a source of stress. So I can't afford to take stress when I'm speaking for a talk on de-stressing y'all, can I? So I'm not stressful, don't worry. So because I expect y'all also not to be stress-free. So it's a challenge for y'all. Now come what may happens with this mic, you're not supposed to look at them. You have to look straight at there. So we sometimes forget that we are becoming doctors because we want status. If you become more super specialized, which I am, we feel, yeah, I am better than the pediatrician, right? Sometimes we feel that. That comes inside. I am better than the GP, I am this. So what is all this? It's a cause of stress actually. Remember, stress is nothing to do with outside coming from, it's a state of mind. And this state of mind, there are many intricacies. Today Dr. Sachin Parab will take in detail what is the mind and how Raj Yoga meditation can take care of your disturbed mind. He'll tell you in detail. And let me tell you, he has a lot of humor in his talk. I'm trying to copy a little bit so that it sets a stage for him so you all can start laughing more later during his talk. So let's come to business now. What is Vihasa? I have spent almost 10-15 minutes telling you a lot around Vihasa, but what is Vihasa? Now let's come to that. As the sister who was here on the dais, she was telling you it's a personal and team development program. Most importantly, before you develop a team, you have to develop yourself. And you know there are many workshops in the outside world which will help you in developing on the team level. They'll also help you in doing the self-development. But what is unique to Brahma Kumaris is that this program which we are doing is exclusively for healthcare professionals. And secondly, it is an experiential program. Today I won't be able to do a few exercises with you all. We can do it sometime later if Dr. Deshpande gives me a chance through the IMA to get a few Vihasa workshops sometime. But let me tell you that experiential, when I say that, I mean to say if you go on the YouTube and type self-development, you will get many lectures. Kitne lectures sunenge? You get inspired by lectures. Today I'm giving you a lecture, you are inspired. But what I want you all to do is take it as an experience so that you don't have to be dependent on the lectures. You experience here and yahan ka anubhav aap leke jao. And once you experience that, you'll never forget it. Okay, because this is what we say in spiritual terms here, Anubhav ki authority. So, how this program came into the being? Everyone has been speaking about our very dear Dadi Janki ji. I think many of you all have heard about her. Sarita Didi spoke. This Jagdamba Bhawan which you are in the campus right now is a big boon from Dadi Janki. She was the one who was instrumental in the construction of this building in almost 2.5 years, if I'm not mistaken. 2-2.5 saal mein ye ban gaya hai. And all of you are taking benefit. So she was a visionary lady. She was also called the most stable mind in the world. Unka EEG kiya tha California mein. And she was seen that always to have a delta rhythm inside. If you know what delta rhythm is, the most stable rhythm. And also I must say the gamma rhythm, because whatever
activity she was asked to do mentally. Despite that, her state was always having that delta and gamma rhythm. So she was once admitted in the UK. She served in the UK, not knowing English, remember. So she has served through vibrations, not through the words. And from 1974 to 2007, she served in the UK, where we have our London coordinating office, and that is the hub for international Brahma Kumaris. The main headquarters are in Mount Abu, no doubt. And once she was admitted for a simple cough cold to the hospital. And there she saw that the doctors and nurses who come for the rounds, they are not very happy internally. They have something called compassion burnout or compassion fatigue. Then they have a poor morale. Though doctors are thought to be the creamy layer of profession, but they are not enjoying their life. So she approached the spiritual Brahma Kumaris of UK over there. I'll show you who those are. And she told them that you have to serve these people, serve the white doctors. When I say white, I mean to say foreigners, not white exactly. So it's a challenge to serve those people in the sense they don't believe in spirituality because they don't believe in the existence of God. As in India, it's very easy. I can tell you, आप भगवान में विश्वास करते हो? Yes, prayer करते हो, इतना meditation you all do in some way or the other. And second thing is, without telling them the word soul, अभी तो आपको सब बताया, सुनंदा दीदी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया 3 dots. पहला dot, आप लोग हो, this is a beautiful culture we have. Why have they applied a dot here? Why do you all apply in the Hindu tradition dots here? When you go to a temple, why is a dot put here? Why not somewhere else, anywhere? So, without introducing the soul and without even believing whether God exists or not, you have to introduce spirituality into them. So that was a tough task. So they told Dadi Janki, we can't do that. She said, no, you can do that. And how can you do? By this universal principle called values. Because all of you know, foreigners are much more value-based than us. Do you feel that? They show much more values in their life. No? Okay, fine. We won't go there. So she approached them and then she told them, come up with this program. And the program is through Janki Foundation, which is in her name, Janki Foundation for Spirituality in Healthcare. And these are all those people who I told you. They have brainstormed for 4 years and they came out with this beautiful program. As you can see, their job titles are, they are psychologists, psychotherapists, so they understand the human mind very well. And particularly being from the healthcare profession, as we were discussing before, that I know what problems you all are facing because I belong to the same profession. And then this program was started. It has been practiced in so many countries, and you can see this is the entire big book which you can see. If I can show that, I don't know which, here it is. This is a big folder, we don't have it here, but sometime we can show it to you all. It has been running in so many countries, and so many facilitators have been trained, around 750 in so many different countries, and it has also been in almost 12 languages now. But the basic mode is English. As we move further, here we have Dr. Ashok Mehta. Anyone in the audience knows him? You can spot him out where he is. Okay, I think those people know right here. Okay, yeah, you know him, right. You're also a cancer surgeon or a surgeon? You, yeah. Homeopath, but you know him. Right, okay, good. Because he's also the president of medical wing of Brahma Kumaris. So many people know him through that. He is the one in the black tie, the gentleman there. Here you can see Dadi Prakash Mani, who was the then administrative head before Dadi Janki. This program was launched formally in April 2006. And here you can see it was launched by our very own late APJ Abdul Kalam, because he was a person who believed a lot in values and he really liked this program. It's very dear to his heart, this program. And we are very thankful to Dr. Mehta because I was the one who was inspired by him in 2014 August. My journey of Vihasa started. And again, I feel I am not doing anything because it is God who is using his instruments. And it's almost now 14 and 22. So it's exactly 8 years. It's really been running very beautifully, this program. What we do in this program, I'll go in the details. We don't take lectures as we are taking here. We facilitate. What is facilitation?
Exchange, good. Enabling, yes. Good. Any other few words? Imparting, yes. Fantastic. And what is the difference between facilitation and teaching? Don't we do imparting and teaching? We also enable in teaching. And we also, what was the word here? Promoting. Okay. So facilitation is to make something easy. Okay. And a teacher will always tell you, asa asa kara, mi je mante, that is right. Yes, one-way traffic. So it's what we call a monologue. And teaching is full of didactic lectures, which means, aap betho, I will teach you, and you don't have to sort of interrupt. I'll take 40-45 minutes lecture, that's it, and tomorrow I'll ask you one questions on that. Whereas facilitation is something which is not like that. It is a dialogue. There are sessions which we sit with you all in small groups. We ask questions from you, and this is what we call the program. The essence of this program is, it underlies something called appreciative inquiry. This term, I would say, is the AI of Vihasa. What is AI otherwise? Let's not go there. The techie term will say, Puneet Bhai is giving us that techie word. We don't want artificial intelligence that way, but Sachin Bhai will tell you about artificial intelligence for yourself. And I would tell you appreciative inquiry. Ki when we sit in small groups, when we do these workshops with you all, we encourage you all to, we ask you such questions, which are there in the exercises, which will be motivating you to think on a deeper level and come out with some beautiful sharings from your life. And therefore, what we call that this program is facilitated experiential learning. I'll repeat, facilitated experiential learning. So myself and Dr. Parab, we facilitate these sessions. We don't teach anything in the sessions. And from each one's experience, you all start learning. So this is what this program is about. This is what is experiential learning, the famous Chinese proverb that if I hear something, I forget. If I see, I remember. But if I do something, I understand it. And remember, all this is done in a very supportive environment. Do you feel Jagdamba Bhawan has a lot of supportive environment? Are you feeling very naturally calm and peaceful here? Any specific reason why you're feeling that? Yes, why you're feeling the positive energy? Silence. Yes, good. Discipline. So here it's because, as the word was used, yogis, many meditators come here and regularly meditate. Do you want to be a part of that as well? Maybe once a week at least. How many of you stay close by 5 to 6 kilometers radius? Okay, a few of you more from the female side. Right. So you can definitely use this place. It's fully, all these courses offered here are free of cost. The sisters will tell you all later. But I would request you all, because I have also seen a change in my life. Since 2008, I have been practicing this Raj Yoga meditation, and you really need to give time for yourself. You need to find out time. As you give time for everything in life, you also want to go for on a holiday, vacation, all of you. This is a vacation for your mind, a holiday for the mind, which I think is very important. So let's not go in these details. Let's move further. Coming to the 3 key principles of Vihasa about this program. So the first key principle is very important. What is it written? Physician, heal thyself. If I say it, you may not like the word, doctor pehle apne aap ko theek karo. Is it wrong when I'm saying that? No, okay, good. I'm happy that it's an emphatic no coming from a doctor, and that too from the IMA. Yes, so, and you have realized, this is the first key principle which you all have realized already, that we are not well inside. And let me not go in the details of WHO definition of health, physical, mental, I'm not going in that. But do you feel that we are ill from inside? Because our mind is not healthy. So all this Vihasa works on the principle of, again, the mind, and it is you have to heal. It is not treating. What is the difference between treatment and healing? Treatment is just prescription you prescribe. That's it. What is healing? From our own, okay, and it's more of a holistic approach. And we say doctor treats, heals. Who heals? God heals. So do you want to become the true gods for your patients or no? वैसे तो सब बोलते हैं भगवान है डॉक्टर, but do you feel हम भगवान हैं? मेरे को तो कभी नहीं लगता है हम भगवान.
right? But when I start meditating, when I start connecting to the divine, then I don't feel I'm Bhagwan, but I feel very nice. So that feeling is important. And once I am able to heal myself, then I can heal my patients as well. Second key principle, I already told you that we are learning through facilitated experiential learning. That is, learning from experience. How many homeopaths here? Please raise your hands. Okay. None from here. How many Ayurvedic? Okay. Majority of women in here as well. How many allopaths? The remaining of you. So allopath, Ayurveda and homeopath. Can we relate to each other? Okay, that's a good answer. But if you go into the details of the medicine, Ayurveda principles, homeopathy principles, allopathy, can we relate to each other? Not really. We are at a bit of friction when we think of each other pathies. But when we do this program for doctors who are from varied pathies and they sit together, what they can relate to, on what level? Patient, okay. Patient is a common thing. Patient का ही याद आता है हमें, right? अच्छी बात है. Yes, fantastic. That's the answer. I think you have listened to this before. Okay, good. That's the answer. So, yes, everyone's experience is so different. And though we are doctors under the big category as healthcare professionals, but everyone's experience is so different. So we learn from each other's experience. And lastly, the most important principle is don't keep this here in the Jagdamba Bhawan campus. What do I mean by that? You have to take it from here back into your work life. Abhi to acha lag raha hai sun ke bahut. As I said, there is no challenge in the atmosphere. But when we do these workshops with you all, we encourage you all towards the end of the workshop to do action planning. That how can you take these values back into your personal life and professional life. Okay, these are the modules which we have. Just because I'm taking the introduction of Vihasa, so it's my duty to tell you all values, peace, positivity, compassion, cooperation, valuing the self, spirituality in healthcare and building resilience. So are you motivated enough? थोड़ा सा मैंने अच्छा सेल किया है विहासा को. Are you motivated? Which module you want to do? Maybe not today, but sometime in future. These are the modules. You understand what is modules? Modules is a structured program. It's a format, lot of exercises, mental exercises, I mean, not physical ones. And they are in the form of modules, eight modules. Each module is related to something. So what would you want to do in future if we want to plan a Vihasa workshop? Cooperation, okay. Spirituality in healthcare. Positivity, right, okay. Oh, that's the answer. All of them, but I can give precedence to cooperation, spirituality in healthcare and positivity as well mentioned. So see, all these are highly relevant, all these modules, when we go in the depth of each module, they are highly relevant to what we are undergoing. COVID pandemic has induced a lot of negativity and fear. So positivity module, we did this a lot for online. We did it online because there was no other source to do. Online, we did a lot of positivity for a lot of practitioners and they really benefited from that. So we'll see what we can do in future. And now the last 15 minutes or so, I'll spend a few moments about each of these tools. So whenever we do any workshop, we have some tools. So we'll just discuss these tools. The first one written is meditation. So Dr. Sachin will take you in the depths of all that, the physiology, the anatomy of meditation, and what exactly he'll help you experience also. And I'm sure in between when we are taking those pauses, the sister who was here took a pause and she was trying to tell you, go within, connect, Bindi, Sunanda Bizidi was telling you. So all these intermittent pauses, which also I think at 12 o'clock there'll be a nice pause, the traffic control song which will be played. So what does meditation simply mean? I need some answers from you. Meditation is calmness of mind, yes. Yes, self-realization, concentration. Still and still only, stillness. Someone said from there some answer. Feeling? Healing, okay, good. No thoughts, thoughtless. Oh, so beautiful answers. So I hope you have a lot of food for thought. Dr. Sachin will cover all that.
Self-reflection, right. So meditation simply means to take care of your mind. Whatever you have said is all taking care of your mind. And it comes from the word mediri. Mediri means to heal oneself. So that's also partly correct what you said. So you'll have a lot of meditation sessions when we do workshops as well. Coming to the next tool, visualization. What do you mean by visualization? Looking at something? Okay, so what is the difference between imagination and visualization? Something which is not there in front of me and is not real will be imagination. But visualization is something which I want to, though it's not there in front of me, which I want to achieve. So my goal, so I visualize my goal. I don't imagine my goal, do I? So when we sit in meditation also, someone will tell you, visualize you are a soul. Not imagine you are a soul. ये मेरी वास्तविकता है, मेरी सत्यता है कि मैं एक आत्मा हूँ या एनर्जी हूँ. Do you feel that you are the soul? अभी इतना नहीं लगता है, नहीं लगेगा, अच्छा है, so अच्छी बात है. But when you start silencing your mind and when you sit with yourself and when you create this beautiful thought, I am the soul, you'll realize it. Now, I always give this example, it may not sound very good, it's 11:50 now, soon it will be 12 o'clock. If, for example, suddenly I get a heart attack here, and if you are not able to revive me, CPR, cardiopulmonary resuscitation, I'll be declared dead. So now they were telling me, they were felicitating me as Dr. So-and-so, and when I have sort of, I must not say dead, when I leave the body, Manoj ko leke jao. What do you say, body leke jao? What happened in that 2-3 minutes? The energy, the soul has left the body. So question for all of you, do I need to wait till death to realize that I am the soul, I am the energy? No, obviously not. And that is not our purpose. The purpose of Rejuvenating Medical Minds is to tell you right now, in this very instance, tell you that's fine, but make you experience. And that's the reason this Vihasa workshops help a lot. So visualization is that. The third one is reflection. Someone said self-reflection. Shushma sister says that. What is reflection? So I'll tell you, when we do exercises, we ask you all to go back in your life and think about something on a deeper level. So it is deep thinking about something. That is also called contemplation. So that is reflection. Yes, flashback in one way, but something fruitful we achieve from the flashback. That is reflection. So very true. Next is appreciation. Remember, everyone in our life likes to be appreciated. Right? Sachin Bhai will always ask you in between, how do you appreciate when you want to appreciate? Huh? I like you. Okay, bahut acha. So that is something from words. And dusra, by showing something, some physical activity. Yes, gestures, clapping, applauding, right? So many ways you can do. So, as I told you, AI, again remember, take this home. AI, appreciative inquiry. Appreciative inquiry, start using that right from today. Today when you go back to your home or hospital, maybe tomorrow morning, try to ask questions from your patients, staff, colleagues, whoever you want to, but let your mode be appreciation inside. And this should be genuine appreciation, not on the face. Arey haan, isko khush karne ke liye. No. It should be something coming from within. In the positivity module, we will be doing an exercise whereby there are 4 important basic principles of appreciation. We will be sort of discussing that how you should be doing appreciation, so that it is not like a converter here. If you remember, Shivani Bhain always says, I'm sure all of you know Shivani Bhain very well. She keeps saying this, there's a converter here. What converter is that? I may be thinking very dash about you, but I can speak very good words with you. Will that vibration go to you all? Not really, because I have to work on my thought process. So appreciation really is building up positivity inside the self and trying to use that to help motivate others. So that is another tool. The next 3 tools is first is listening. So what are you doing? Are you listening to me or just hearing? How do I know? Any ENT doctors here? No one? Okay, I thought someone is picking up hands. Okay, you are smiling, looking at each other. So which means you are hearing me, not listening to me.
What is listening? What is the difference between the two? We were just at a session in in Borivali, in Mumbai. And I'll take your sharings just a moment. So someone in Hindi said, hearing is kaan se sunna. And listening is dhyan se sunna. Okay, so now you tell me what you all were doing last 45 minutes. Listening. Obviously, जाएगा तो यहाँ से ही sound अंदर वो tympanic membrane हिलेगा, no doubt. You all know all that physiology. But this is on a deeper level. You have to seep in. And some people say through all your sense organs you have to listen. And listening is a very excellent healing tool. When you listen to your patients just for 1 minute, not 15 minutes, I'm saying, I know we are all busy, we have to take rounds in the hospital. But even 1 minute, if we listen to what they are saying, that can induce healing in the patient. Creativity and playfulness, these two tools. Yeah, so you can see again all the noises going on in the background. So should we stop for that, or you can just enjoy the music? I'll just continue, because otherwise मेरा 2 minute वाला वो चलेगा. Okay, so this is that traffic control song, which we normally do, and as I said, it will go off in between. So these two tools are used in childhood. You know, your creativity is maximum when you are a child. Your playfulness is maximum when you are a child. What is the difference? As a child when you play, and as an adult when you play. We don't want adult play, we want children. We want to be childlike or childish? Childlike, obviously. अभी वो कुछ कर रहे हैं, झगड़ा हो गया, back to normal in a few minutes. But adults, we carry on a lot. So these two tools help you in using your left brain or right brain. You know that we have two parts of the brain, both are interconnected to the corpus callosum, you know. So right and left brain concept is no more valid, but it's an old traditional concept that doctors are which brain oriented? Yes, you are right, left brain, L for L. हम लोग बहुत लॉजिक लगाते हैं, लगाना भी पड़ेगा. डायग्नोसिस के लिए लॉजिक लगाएंगे, नहीं तो डायग्नोसिस नहीं होगा. सर्जन्स कितने हैं यहाँ पे? 1, 2, 3. ओके, सो सर्जन्स को भी लॉजिक लगाना पड़ेगा टू ऑपरेट. इफ यू डोंट अप्लाई, इट विल नॉट बी. सो देन व्हाई आर वी सो इनफेमस, बदनाम, that we apply a lot of logic, particularly allopathic doctors. But जितना logic लगाएंगे, लगाते जाएंगे, उतना हमारा right brain थोड़ा सा atrophy हो जाएगा, थोड़ा सा development उसका कम हो जाएगा. And what is this right brain used for? It's for this creativity. It's for the intuitiveness. Like चलते चलते, if you feel you're on this road, and then if you suddenly feel from intuition, gut feeling बोलते हैं लोग, that you take this road and you reach home early, what do you feel inside? अरे अच्छा हुआ मैंने ये रास्ता लिया. Why? Because जल्दी घर पहुंच गया. So what was that gut feeling intuition? That I should use this road, right? And then you feel happy that I have used my intuition. So that intuition is coming from inside. So उसमें कुछ logic था क्या that मैंने ये रास्ता लिया? It was just a feeling inside. So as you start doing meditation, listening, all these tools, your creativity improves and your sensitivity towards people improves. Then you can really just look at your patient and see what he or she wants. You can start reading their mind. And then will you feel that the patient is irritating? See, there's a patient who keeps asking 100 questions to me. So I'll say this patient is irritating, but the same patient may not be doing that with this other doctor. So it is my perception of the patient. The patient is not irritating. I am getting irritated by the patient. So in future, whenever we start practicing listening and you start doing more meditation, you'll see that your patients also start becoming, because you transmute that energy, they start becoming more and more gentle and calm. And
Good. So any questions you have about the program, because we are running before time, so you can ask a few questions about Vihasa. Or anything generally, how you want to go about this program in your setup. Yes, I know your question. Because even I belong to that category. We are all having small clinics. We are not having big hospitals. That's the perfect, because I think many people here are just practitioners having small clinics, maybe attached to hospitals, but khud ka setup nahi hai. Can I just know how many of you here are practitioners having clinics? Okay, almost 40-50%. How many of you have your own hospitals? Okay, 4, 5, so less of that. Yeah, so this question is good, that it doesn't mean if you have a small clinic, we can't do it in your place. So then what we do is we try to not organize in your small setup or in your clinic. You all need to come to a place where you get a supportive environment. Do you feel Jagdamba Bhawan is highly supportive? Do you find the vibrations very conducive? And will you get these vibrations in your small setups and clinics? Or maybe in big hospitals? No. So what we can do is we can organize, the sisters can help you all, you can keep in touch with them. And we can organize on Saturday, or I think Sunday would be best for you all. Half-day workshops also should be fine. So you all can come here and we'll organize. And whichever module you all want. Okay. But you all need to spend some time for yourself. Because everyone is saying, हमको एक ही दिन Sunday मिलता है, वो भी यहाँ पे जाएं क्या conference में? This is not a conference. This is a workshop which we'll be doing for you all in future. So we can organize it very much here. Okay. There are 8 modules, and each module is around, as I said, 6 to 8 hours activities are there. And there are activities, there are discussions, they are not lecture based. So sometimes we can give you a glimpse of that if we can do it sometime here. So if you're so motivated, push the people here to do it. And Sushma Bahan is there, you can keep in touch with her, so we can do it sometime. Yeah, maybe here only. Okay. Yeah, good. Yeah, so we don't really need a lot of people. We need max 20-25 people who can sit in small groups. So 20-25 max. We can do it in IMA hall also. But as I said, I would prefer to do it more in a spiritual background, because IMA hall is very nice. It doesn't have the spiritual vibrations, but can you make it spiritual? So maybe we'll do a couple of sessions here, and then once you're spiritually motivated, let's go there and make IMA a spiritual hub. Can we? Yes, we can. So we can do it in IMA later. First few sessions here. Okay. Yes, I think the silence is speaking, and we'll invite Dr. Sachin Parab. Thank you. That's very... Thank you, Dr. Manoj Matnani. And I actually would like to thank you all, because even I always heard this word Vihasa, but personally I was not sure what it is. So really, because of you, I was able to hear. And I think I really liked one of the tools that he mentioned was appreciation. And something that came up to mind was, there would always be this one person, on the screen of my mind. If that comes, we just lose. So maybe again we will take this one moment of silence and bring that person on the screen of your mind that creates an irritation, when you think of them, जैसे उनको सोच के ही कुछ हो जाता है. But अभी हम क्योंकि यहाँ पे है तो positivity values को practice करेंगे. तो let's bring that one person on the screen of your mind. और आज हम उनकी नेगेटिविटी नहीं देखेंगे. आज हम उनके बारे में एक अच्छी चीज़ that we appreciate about them. So let's have these few moments of silence. Bring that person and think of this one positive quality in them.
Shanti. So what was that, easy or a bit difficult? Easy? Oh, that's great. Right? So yeah, it's very nice to appreciate the values or the qualities of others. So moving further, we have our next speaker, which is Dr. Sachin Parab. And I'll give again a little bio of him. Dr. Sachin Parab is an MBBS from Mumbai University with specialization in clinical research. He is a professional counselor and hypnotherapist, regular speaker for BK Peace of Mind channel with top-rated weekend special programs of Secret of Ultimate Living, which is aired in 40 countries of the world, has been on ETV Marathi for many years on spirituality and values-related programs. He is also a project director of Global Initiative of Tobacco Awareness. He is a corporate trainer to various corporate sectors across in India. He is also a national coordinator of My India, Addiction Free India campaign. He is also a facilitator for Vihasa international programs for healthcare practitioners. He is also a consultant to the Indian pharmaceutical and clinical research organizations, and he has been practicing and teaching Raj Yoga meditation since 26 years. So I would like to invite Dr. Sachin Parab to share on the topic Rejuvenating Medical Minds, which is the theme of today's conference. Dr. Sachin Parab. हेलो, ओम शांति। थोड़ा दिल से ओम शांति, थोड़ा मुस्कुरा के ओम शांति। आर यू कंफर्टेबल? हाँ, सुबह से कौन कौन बैठा है इधर से? वी स्टार्टेड एट 10 o'clock, 10:30, 10:15, 10:15। तो बहुत देर से आप बैठे हैं। Is it okay if I ask you to stand? हाँ, प्लीज़ खड़े रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। क्या है, वो एक मोड में घुस जाने के बाद अंदर कुछ जाता नहीं है फिर। Will you stretch yourself? थोड़ा स्ट्रेच करें। तरह से बजाओ तालियां। वेरी गुड। हाँ, थँक यू व्हेरी मच। प्लीज सिट डाऊन। अगोदरचे स्पीकर ना माझं टेन्शन वाढवतात भरपूर। किती लोकांनी माझं नाव घेतलं, अभी ऐसा बोले, सचिन भाई बोलणे, लोकांच्या अपेक्षा वाढतात उगाच। एंड देन व्हेन यू नॉट अप टू द मार्क, देन से खाली पिली इतना बोल दी।
I was once taking a session in southern part of India. ऐसे ही बहुत बड़ा नाम लगा था, डॉक्टर सचिन फ्रॉम मुंबई. अब मेरा सेशन चालू हुआ. It was on stress management. So I speak for 15-20 minutes. There was a translator क्योंकि कई लोगों को नहीं समझ रहा था. So the lady who was translating, she translated my speech in just one line. It was on stress management. एक लाइन में ट्रांसलेशन किया, मेरा टेंशन और बढ़ गया. मैंने कहा अभी इज्जत का सवाल है, और अच्छी तरह से मैं बोला 15 मिनट. फिर से मेरा ट्रांसलेशन एक लाइन में. आई थॉट इट्स अ सिग्नल टू मी. बट मैं दूसरों को हमेशा बोलता हूँ पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो. तो मैं बहुत पॉजिटिव सोच रहा था अंदर, पर मेरे से रहा नहीं गया. सो आई आस्क्ड दैट ट्रांसलेटर कि मैडम ऐसे क्या ट्रांसलेट किया आपने. नहीं डॉक्टर साहब छोड़ दो, कोई बात नहीं. मैंने कहा कोई बात नहीं क्या, मेरा टेंशन बढ़ा हुआ है. व्हाट ट्रांसलेशन यू हैव डन. तो उसने कहा डॉक्टर साहब पहले 15 मिनट का ट्रांसलेशन ये था कि अभी तक डॉक्टर साहब ने कोई नई बात सुना ही नहीं है. मैंने कहा व्हाट वाज द ट्रांसलेशन ऑफ नेक्स्ट 15 मिनट्स. शी सेड हमको नहीं लगता डॉक्टर कोई नई बात सुनाने वाले हैं. So many times when I am interacting with senior doctors like you are sitting here, I feel that way. But I hope थोड़ा हम नया सीखेंगे, है ना. बच्चों की बात कर रहे थे, चाइल्डिश एंड चाइल्ड लाइक, है ना. तो मेरा एक दोस्त है जिसने बहुत अच्छी कविता लिखी है. डू यू लाइक पोएट्री? हाँ, अच्छा लगता है. इट्स अ लीडिंग क्वेश्चन एम आस्किंग. मोस्ट ऑफ यू विल से यस. पर अगर अच्छा लगा तो क्या करेंगे आप? हाँ, ताली बजाएंगे. वेरी फास्ट लर्नर्स. सो द पोएट्री गोज लाइक दिस. कागज की कश्ती थी. बचपन में हम क्या करते थे? आप में से कौन कौन है बचपन में कागज की कश्ती को पानी में डालते थे? वेरी गुड. अभी भी बचपन आ गया नहीं. ठीक. कागज की कश्ती थी, नदी का किनारा था, है ना. खेलने की मस्ती थी, दिल ये आवारा था. कहाँ आ गए इस समझदारी की दलदल में कि वो नादान बचपन कितना प्यारा था. वो नादा बचपन कितना प्यारा. तो समझदारी की दलदल से थोड़ा बाहर निकलेंगे, अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे. आर यू सिटिंग कंफर्टेबल? आप ईज में हैं? यस. डॉक्टर बन के बैठे हैं. वेरी डिफिकल्ट. I was taking a session for directors. There were only 8 to 10 directors. One director was coming back and I am the director of this hospital. I am the director. मैंने 3-4 बार सुना. मैंने कहा सर with due respect, you will retire after 6 months. तब आप डायरेक्टर नहीं होंगे. Immediately said I will be the ex-director of this institute. And that is the cause of our stress. तो मैं चाहता हूँ आप थोड़े समय के लिए भूल जाओ. लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन. आप लेक्चर चाहते हैं, एक्सपीरियंस चाहते हैं? एक्सपीरियंस माने लेक्चर नहीं लो, एक्सपीरियंस. हाँ, लेक्चर विथ एक्सपीरियंस. डॉक्टर्स आर वेरी इंटेलिजेंट. आगे लेक्चर विथ एक्सपीरियंस. हम ज़्यादा दूर एक्सपीरियंस के ऊपर देने वाले, क्योंकि ये बातें हम सब जगह पे सुनते हैं, है ना. कोई नई बात नहीं मैं बताने वाला हूँ. मेरा एक ही है, मैं सभी मेडिकल कॉलेज में यही पूछता हूँ कि वी आर टॉट ऑल द सिस्टम्स बट वी आर नॉट टॉट पर से अबाउट हीलिंग सिस्टम. हमको रेस्पिरेटरी, कार्डियक, नर्वस सिस्टम सब बताए जाते हैं, बट हीलिंग सिस्टम के बारे में ज़्यादा नहीं बताया जाता. यू एग्री? हीलिंग सिस्टम इज़ द वे बॉडी मोबिलाइजेस ऑल इट्स रिसोर्सेस. और वो हीलिंग सिस्टम को जब आप एक्टिवेट करना जानोगे तो यू कैन हील द इनक्यूरेबल डिसीज. हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड अबाउट नॉर्मन कजिन्स? हर्ड. हु वाज ही? कौन थे वो? यस. नो, ही वॉज नॉट साइकोलॉजिस्ट. ही वॉज जर्नलिस्ट. बट ही वॉज सफरिंग फ्रॉम इनक्यूरेबल डिसीज, ankylosing spondylitis. Orthopedic surgeon here? Anyone orthopedic? Ankylosing spondylitis or bamboo spine, है ना.
The spine is frozen, person cannot move. It's a slowly progressive disease. And he was told that, हो गया अभी आपका लास्ट टाइम है, आप हॉस्पिटल में ख़त्म हो जाओगे. He refused to accept the diagnosis. He said, मैं ऐसे नहीं मरूंगा, मैं हंसते हंसते मरूंगा. He took discharge. He went to hotel, a beautiful hotel, and he used to watch the movies of Charlie Chaplin and Laurel Hardy. Laurel Hardy पता है आपको? हमारे बचपन में वही हम देखते थे, Laurel and Hardy. So, and he used to laugh a lot. He used to make jokes with the doctors and nurses. What he realized, when he was happy, his requirement of painkiller is to go down, injection, and slowly increase the dose of happiness. And what happened? He is the only patient who is cured of ankylosing spondylitis. He was discharged and he was later on called in the medical colleges. Please share your experience, how you healed yourself. So Brahma Kumari believes that incurable means it cannot be cured by outside. You have to go inside to cure the disease. That is the word incurable. So he has written a book, Anatomy of an Illness, and this is from the book. He says belief system is the activator of healing system. Unfortunately हमको ये सिखाया जाता है कि क्या नहीं हो सकता, लेकिन क्या हो सकता है उसके बारे में वी आर स्केप्टिकल. डॉक्टर्स की पहला ध्यान किसके ऊपर जाता है, जो सही है या जो गलत है? जो गलत है उसके ऊपर जाएगा. बिकॉज दैट इज हाउ यू डायग्नोज द डिसीज. बट कुछ लोग जो अच्छे होते हैं वो क्यों अच्छे होते हैं उसके ऊपर रिसर्च नहीं है. अगर कोई कैंसर में से ठीक होता है तो हम क्या बोलते हैं, कैसे ठीक हुआ? व्हाट इज द वर्ड वी यूज? No, we use the word palliative. No, he is cured completely. Body response was good. Willpower, अच्छा. Spontaneous resolution is the word. वो spontaneously ठीक हो गया. Spontaneous regression or resolution of the disease. And we ignore it. Actually, we need to study that, how he has healed himself. Do you think or not? So in whole session we'll be going into depth of this. He is the person who healed himself, and he wrote a book on anatomy of illness, which book was on New York Times bestseller list. Then he survived heart attack also. And this is very interesting story. I share this story. मैं देख रहा हूँ यहाँ पे फैमिली मेंबर्स भी बैठे हैं डॉक्टर्स के. कोई है फैमिली मेंबर्स डॉक्टर के? अच्छा. How many of you are comfortable with English? Should I speak in Hindi? Or Hindi English is okay? Okay, comfortable? Okay. So this story is reported in journal, medical journal known as Krabbe's miracle. This person was suffering from Hodgkin lymphoma. Have you heard about Hodgkin? Hodgkin देखा है आपने? Lymphoma, tumor everywhere, and his doctor who was treating him was doing a study on Krabbe's. Krabbe's was a new drug for Hodgkin. तो ये पेशेंट ने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि ये नया दवा हॉजकिन के लिए चल रहा है. तो वो गया, डॉक्टर साहब मेरे को ये इंजेक्शन चाहिए. बोला ये अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है. बोला नहीं डॉक्टर साहब ये मेरे को दे दो. सो डॉक्टर सेड उनको भी पेशेंट चाहिए था. बोला ठीक है कंसेंट दे दो. एंड दे गेव हिम क्रेबियोसिन. क्या हुआ रहेगा, डॉक्टर ने उसको जैसे ही क्रेबियोसिन इंजेक्शन दिया, ऑल हिज ट्यूमर मेल्टेड अवे एंड ही वाज एब्सोल्युटली ऑल राइट. डॉक्टर भी खुश, पेशेंट भी खुश. बट आफ्टर 6 months देयर वाज इंटरिम रिपोर्ट. ट्रायल्स होता है ना, उसका रिपोर्ट पब्लिश होता है. वो रिपोर्ट में क्या लिखा था कि क्रेबियोसिन डजंट वर्क इन ऑल द पेशेंट्स. पेशेंट ने वो रिपोर्ट पढ़ा, क्या हुआ रहेगा, उसके सभी ट्यूमर्स वापस आ गए. अभी डॉक्टर को पता चला कि इसने रिपोर्ट पढ़ा है इसलिए ऐसा हुआ है. सो डॉक्टर यूज वन ट्रिक जो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं.
वो गए पेशेंट के पास और बोला पहला जो क्रेबियोजिन था दैट वाज इम्प्योर, इट हैड लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज, नाउ वी हैव प्यूरिफाइड दैट क्रेबियोजिन, और ये जो इंजेक्शन है ये सबसे प्योर है, और उसको वही इंजेक्शन दिया। क्या हुआ रहेगा? ऑल हिज ट्यूमर मेल्टेड अगेन एंड पेशेंट वाज एब्सोल्युटली फाइन फॉर सम टाइम। 1 साल तक पेशेंट एब्सोल्युटली फाइन। उसके बाद फाइनल report of the trial was published. You know what was the final report of क्रेबियोजिन study? Final report ये था कि क्रेबियोजिन doesn't work in Hodgkin lymphoma. Patient ने पढ़ा, क्या हुआ रहेगा? All tumors came back and that patient died. Now my question to all of you, वो ट्यूमर को पैदा किसने किया? Are you there? और उसको ठीक किसने किया? So mind can kill also and can heal also. आप अपना माइंड किस लिए इस्तेमाल करते हो? प्लीज, मैं देख रहा हूँ आप सबके चेहरे में आया, मैं जानबूझ कर वहाँ बैठा था, मैं आपका रिस्पॉन्सेस देखना चाह रहा था कि आप में से कितने लोगों के चेहरे पे स्माइल है, ये मेरा रिस्पॉन्सेस देख रहा था मैं। डोंट आस्क मी द आंसर। सिर्फ वो मास्क वाले मेरे को पहचान में नहीं आ रहे थे। आप हंस सकते हैं क्या? कैन यू स्माइल? थोड़ा कोशिश करो, बहुत मुश्किल है। कई लोग कैसे हंसते पता है? दे कम बैक बिकॉज दे फील दैट वी लूज द फोकस। ऐसा नहीं है, गंभीरता अच्छा गुण है। ब्रह्मा कुमारी में इट इज टॉट गंभीर रहना चाहिए, पर अंदर से कैसा होना चाहिए? प्रसन्न होना चाहिए। गंभीरता इज अ डिवाइन क्वालिटी, लेकिन अंदर से रुक्षता नहीं चाहिए। मैंने एक सेशन लिया था पुणे में, आपके एक बस ड्राइवर, एसटी ड्राइवर ने एसटी निकाली थी, पता है, उड़ाते हुए गया। यू रिमेंबर दैट? संतोष, नाव पण लक्षात आहे मॅडम जी मेमरी चांगली आहे। संतोष माने, सॉरी नहीं विसरू शकत। अच्छा, तो व्हाट हैपेंड, मैं मुंबई में, आई एम ऑन द कमिटी ऑफ गवर्नमेंट, तो मीटिंग हुआ बहुत सारा, ये क्या है, इतना स्ट्रेस है, इनके लिए कुछ तो करना चाहिए। सो हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग इन आरोग्य भवन, सेंट जॉर्ज कैंपस, यू नो सेंट जॉर्ज, मुंबई में। तो 19 यूनियन के ड्राइवर्स, कंडक्टर सब आए थे, उनको हमने ट्रेनिंग दिया, और मेरा था स्ट्रेस मैनेजमेंट का। तो मेरा सेशन सुन के एक सायकियाट्रिस्ट आया, आई कैन नॉट टेक द नेम ऑफ दैट पर्सन, और वो आके बोले सचिन अरे तुझं लेक्चर दे। मी म्हटलं काय झालं सर? बोला अरे मला आज कळलं की मी मागच्या महिन्यात हसलोच नव्हतं। दिस इज अ कॅन्डिड ॲक्सेप्टन्स ऑफ अ सायकियाट्रिस्ट, बट दॅट इज द ब्युटी, ही ॲक्सेप्टेड दॅट की मी हसलोच नाही मागच्या महिन्यात। आई ना आज, दैट्स वाई आज द क्वेश्चन टू डॉक्टर कि आप कब हंसे थे, लास्ट कब स्माइल किया था? तो कुछ डॉक्टर बोलते सर मी ना 15 दिवसापूर्वी, हाँ तेव्हा। व्हाट इज दिस? सी, अभी आप हंस रहे हैं, आपको लग रहा है आपका बॉडी माइंड चेंज हो रहा है? हो रहा है? दिस इज व्हाट हीलिंग इज। क्यों ये लेबल लेके चलते, मुझे नहीं। मैं मेडिकल कॉलेज में बहुत सेशन लेता, कल भी मेरा कॉलेज में सेशन था। मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, आपके भी पूछता हूँ, वाई देर इज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन ऑल द मेडिकल कॉलेजेस? वाई देर इज नो हार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट? वाई देर इज नो लीवर एंड किडनी ऑफ द डिपार्टमेंट? वाई ऑलवेज हेड? Why we give too much importance to head? बताओ। सुप्रीम, माइंड योर हेड। अच्छा, ये देखो कई लोग अपने आप को बहुत सपोर्ट करते हैं। आई टेक सेशन ऑन एंगर में, बोलते गुस्सा, वैसे मेरे को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है, वैसे मैं बिल्कुल शांत हूँ। मैंने कहा कब आता है? जब कोई झूठ बोलता है ना, तब मेरे से रहा नहीं चाहता। So it is our choice, है ना? Okay, so क्रेबियोजिन, beautiful story. You must have heard about this lady, Louis Hay. Louis Hay has healed her cancer by changing her thoughts, and her book has broken all the records. You can heal your life, है ना? You can heal your life.
आपको पता है कि फीमेल्स यहाँ पे बैठे हैं, फीमेल्स का बैक पेन क्यों होता है? फॉरगेट मेडिकल कॉजेस, कंबर का दुखते, स्वयंपाक करतात. अच्छा, म्हणजे स्वयंपाक करणाऱ्या पुरुषांची पण दुखली पाहिजे. विचार करतात. प्रेग्नन्सी, इमोशनल बॅगेज, ऑस्टिओपोरोसिस. नाही, बाकी सगळं ठीक आहे, तरी कंबर दुखते. रिपोर्ट्स नॉर्मल आहेत. मला एकटीलाच मरावं लागतं, कोणी मदतच करत नाही घरी. आर यू देअर? आई हैव वर्क विथ लॉट ऑफ दिस. कहते मेरे को कोई मदद ही नहीं करता. यू नो, व्हेन अ हाउसवाइफ फॉल सिक, हाउसवाइफ को क्योंकि पति को टाइम नहीं, बच्चे बड़े हो गए, उनको टाइम नहीं है, मैं अकेली हो गई, मेरे तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है. और जब वो बीमार पड़ती है तो सब क्या पूछते, काय झालं. दे मैसेज गो, जब तक मैं बीमार नहीं पड़ूंगी तब तक कोई. सो प्लीज अंडरस्टैंड, देर आर वेरी सटल थिंग. बैक इज द सिंबल ऑफ सपोर्ट. बैक माना सपोर्ट है. जब सपोर्ट नहीं मिलता है तो बैक दर्द करती है. दैट इज व्हाट रिटन इन, मेरा नहीं है थी, लुई हे ने लिखा हुआ है. हार्ट इज द सिंबल ऑफ लव एंड सिक्योरिटी. लास्ट क्वेश्चन आई आस्क, हार्ट अटैक किसको ज़्यादा आता है? मेल्स को आता है या फीमेल्स को आता है? श्योर? क्यों मेल्स को आता है, फीमेल्स को क्यों नहीं आता है? हार्मोन्स आर इम्पॉर्टेंट, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, बट उसके अलावा हार्ट ज़्यादा यूज करते हैं. कम ऑन, आपके लिए बोल रहे हैं. हाँ, ज्यादा सोचता है मेल, फ्री नहीं होते. किसका? मेल का. नाही, कोई अच्छा जवाब दो. मी ऐकलं पुणे तिथे काय उणे. कोण? दे हैव वीक माइंड्स. काय स्ट्रांगली बोलता है मैडम. शिव बाबा, मैं झगड़ा नहीं लगा रहा हूँ, प्लीज. आई एम आस्किंग अबाउट डिफेंस मैकेनिज्म. हाँ, अच्छा, कितना पॉजिटिव बोला है. अब फीमेल्स एक्सप्रेस करती है, बहुत करती है. रोता कौन है स्ट्रेस आता है तो? अच्छा, फीमेल्स क्राई. मेल्स क्यों नहीं रोते हैं? शान के खिलाफ है, मर जाएंगे लेकिन रोएंगे नहीं. मरा. So that is what happens. So you have to understand our defense mechanism. फीमेलचं खूप चांगलं आहे, भरलं खाली करा, भरलं खाली करा. So they are always, I don't know, I am not going into depth of it, but I am talking about a mechanism which is, people are doing research on that. So understand the mechanism of healing. मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा. एक प्लासिबो का स्टडी आपको दिखा रही है, NEGM में कंट्रोल ट्रायल ऑफ आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी पे ऑस्टियोआर्थराइटिस, प्लासिबो स्टडी. और इन्होंने क्या देखा कि 2 ग्रुप किए थे. एक को कुछ नहीं किया, एक को केवल सिंपल कट किया, एक को क्लासिकल आर्थ्रोस्कोपी किया. और क्या देखा? 44% डिक्लाइन. दैट हम लोग ऐसे स्टडी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, व्हाट दे सॉ वाज देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन द पेन स्कोर. दोनों ठीक हुए. तो जिसका ऑपरेशन नहीं हुआ वो कैसे ठीक हुआ? क्योंकि उन्होंने सोचा कि आई एम ऑपरेटेड. आर यू गेटिंग? अगेन पावर ऑफ माइंड. सो आई एम टॉकिंग अगेन ऑफ पावर ऑफ माइंड. इसको हमको यूज़ करना चाहिए. आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस. आई वॉज एट माउंट आबू, राजस्थान. तो माउंट आबू में हमारे पास एक फॉरेनर लेडी आई थी. वहाँ पे एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है एवर हेल्दी हॉस्पिटल. तो मैं वहाँ पे आई वॉज लुकिंग आफ्टर. तो एक फॉरेनर आए. यस, वेलकम सर. वी हैव प्रेसिडेंट ऑफ IMA महाराष्ट्र, डॉक्टर रविंद्र कुटे. वी विल वेलकम हिम. थैंक यू वेरी मच. He has come from yesterday's program at करजत में प्रोग्राम करके बाय द रोड आए हैं. सो हमारे पास ऐसे 25,000 का प्रोग्राम था. और ये फीमेल लेके आई एक
कौन सा वो मल्टीविटामिन का पिंक कलर का इंजेक्शन होता है, न्यूरोबियन का एम्पल। बोला सर ये मेरे को चाहिए। मैंने कहा क्यों? नहीं मेरे को बहुत वीकनेस होता है, अभी इतना घंटा मैं कैसे बैठ पाऊंगा। मैंने कहा ओके वेट आई विल चेक। मैंने बीपी पल्स सब चेक किया, सब ठीक था। बोला नहीं जब तक ये लूँगी नहीं मैं ठीक नहीं होगा। मैंने कहा ओके आप सही डॉक्टर के पास आए हैं। बोला कैसे है? बोले मेरा हाथ एकदम हल्का है, किसी को पता ही नहीं चलता है। आई एम अ डिफरेंट डॉक्टर। तो मैंने कहा, मैंने उसको 2-3 बार बोला मेरे हाथ से इंजेक्शन लेने के लिए आते हैं, किसी को भी पूछो। मुझे पता है वो पूछने वाली नहीं है। एंड देन उसको लिटा दिया, उसके सामने मैंने वो सीरीज में भरा पिंक कलर इंजेक्शन। बोला देखो अभी मैं आपको इंजेक्शन देने वाला, आपको पता ही नहीं चले। उसको टर्न होने को बोला, स्पिरिट सॉफ्ट लगाया, नीडल को टच किया और वो इंजेक्शन डस्टबिन में डाल दिया और बोला चलो हो गया। वो डॉक्टर साहब पता ही नहीं चला मेरे को। मैंने कहा मैंने बोला था ना मेरा हाथ एकदम हल्का है। और 2 मिनट बाद वो करे अभी मुझे अच्छा लग रहा है, ताकत आ गई। अभी आप मुझे बताओ उसको ताकत कहाँ से आई? क्योंकि मैंने उसका प्रोग्रामिंग किया था, मैंने उसको थॉट्स दिया। So please understand, this is the power which we are using in our practice. नोसिबो भी ऐसे ही है, sickness or death, because of the expectation of sickness of death. मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा, but just to sweeten water दिया गया और कहा कि it is an agent which cause vomiting. 80% patient become sick just by sweet के water को। ऐसा होता नहीं है, बट इज द थॉट विच वॉज वर्किंग। और दूसरे ग्रुप को बोला कि अस्थमेटिक पेशेंट को सलाइन दिया, बट उनको बोला कि इट इज़ वेरी इरिटेंट सोल्यूशन। सिर्फ इतना बोला कि दिस इज़ वेरी इरिटेटिंग सोल्यूशन, इट वॉज अ नॉर्मल सलाइन, पर उस सिंपल सलाइन लिक्विड से उनको अस्थमा प्रेसिपिटेट हो गया। सो दिस इज मेंशन इन दिस बुक, योर माइंड कैन हील योर बॉडी। So this is what we believe in Brahma Kumaris. Healthy means heal thyself, and this word has come from the root word holy. मी एकदा सेशन घेत होतो कॉर्पोरेटमध्ये, ऑल आर सेइंग आम्हाला सुट्टी नाही मिळत, हॉलिडे मिलेगा तब हम रिलैक्स हो जाएंगे. Then I said, you know how the word holiday has come? If you are holy, then every day is a holiday for you. Holiday is a state of mind, not a place to be visited. Correct? If you are holy, then every day is a holiday for you. Which Dr. Mano. If you are enjoying, then every day is a holiday. Unfortunately, this is not taught in allopathy that we have 5 koshas, 5 layers. Ayurvedic doctor खुश होते होंगे. हमारे इसमें लिखा हुआ है 5 layers. So अन्नमय कोशा, विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय and आनंदमय कोशा. So स्वस्थ होना माना स्व में स्थित होना. And this is what EEG they say. We come from this beta to delta stage. अभी हम इसमें जाने वाले हैं. Before that, आप में से कौन कौन सोए हुए हैं? अभी जरा हाथ खड़ा करो जो सोए हुए हैं. Some people they do it. So if someone is sleeping, can he raise his hand? Yes? नहीं लगता ऐसे? आई टेक सेशन फॉर कॉरपोरेट्स ना, तो मैं फार्मा इंडस्ट्री में ट्रेनर हूँ, तो वो सब MR वगैरह होते हैं ना मैनेजर, उनको मैं ट्रेनिंग लेता हूँ. अभी ब्रेन का न्यूरोलॉजी का सेशन बहुत वेरी क्लिष्ट है, ट्रांसप्लांट. तो वन मैनेजर सिटिंग इन फर्स्ट रो और सो रहा है. मैंने कहा बेचारे का मिस हो जाएगा, तो उसको मैंने उठाया. जैसे मैंने उठाया, हाँ सर बराबर बराबर. मैंने कहा क्या हुआ? नहीं सर बराबर. अरे पर मैंने कुछ बोला ही नहीं. So unconsciously he was saying that कि वो सुन रहा है. अब मुझे भी लगता है आप में से कई लोग सुन रहे हैं, पर कान से सुन रहे हैं या है ना, listening is very deep. तो हम आएंगे कि अभी अगर आप सो नहीं रहे तो आपका ब्रेन यहाँ पर है. Any psychiatrist here? Good. I can talk anything about psychiatry. 13 to 30 cycles per, you are fully awake. As you start relaxing, you go here. यहाँ से आपका हीलिंग चालू होता है. हीलिंग एंड क्रिएटिविटी. देखो मैं देख रहा हूँ आप में से बहुत कम लोग हैं जो अच्छे स्टूडेंट हैं. अच्छे स्टूडेंट का लक्षण क्या होता है पता है? Those are good student. हाँ? Not. एक बार टीचर सेशन ले रहे थे. He asked question.
टीचर्स टू स्टूडेंट, बच्चों बताओ सत्य और भ्रम में क्या फ़र्क है? तो स्टूडेंट भी बहुत होशियार थे, सर आप हमको पढ़ा रहे ये सत्य है। आप लोगों का आईक्यू बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा आप हमको पढ़ा रहे ये सत्य है, लेकिन आपको अगर लगता है कि हम आपकी सुन रहे हैं, कभी कभी मुझे ऐसे लगता है। बट गुड स्टूडेंट मैं क्यों कह रहा हूँ, ये जो फर्स्ट रो में ना नोटबुक लेके बैठे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा, दे आर टेकिंग नोट्स। तो जो जिन्होंने भी नोटबुक लेके बैठे उनके लिए तालियां बजाएंगे हम, दे आर टेकिंग इट। अभी वो पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे वो आगे की बात है। एक बार आई विजिटेड अ गायनेकोलॉजिस्ट, वेरी सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट, लिख रही है। मैंने कहा मैडम बाहर पेशेंट, नहीं रुको। मैंने क्या क्या लिख रहे हैं, कल केस है? नहीं मेरे बच्चे का होमवर्क है कल सबमिट करना। अ गायनेकोलॉजिस्ट इन आवर कैबिन फिनिशिंग द होमवर्क ऑफ अ किड। आप समझ सकते कितना टेंशन होगा। So as you start relaxing, you go into the alpha, then theta, dream-like state, and then deep sleep delta. See, meditation माना घर बार छोड़ना नहीं। कई लोग ना ब्रह्मा कुमारी से डरते हैं, इधर गया तो क्या क्या छोड़ना पड़ेगा। कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मेडिटेशन माना यहाँ का लगेज छोड़ना है, यहाँ पे जो लगेज है ना उसको छोड़ना। घर बार छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं, आजकल छोड़ भी नहीं सकते। पहले तो जंगल में जाते थे, अभी जंगल ही नहीं बचा है, आपको उधर ही रहना पड़ेगा, नो ऑप्शन। तो आप इस स्टेट में जाएंगे, इट इज़ नोन एज हाइपोमेटाबॉलिक वेकफुलनेस और रेस्टफुल अवेयरनेस। See, my specialization research, I was part of the team who did research on Brahma Kumaris meditation. मैं बहुत सुना सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा टाइम को देख रहा हूँ, मेरे पास कितना टाइम है। She is दादी जानकी, she was this is what Dr. Manoj was talking about. Experiment was done on दादी. So दादी formal education 3rd standard. तो उन्होंने दादी को यहाँ temporal lobe stimulate किया, गुस्सा दिलाया, so that she gets angry. Then दादी को calculation करने को बोला कि 100 में से 7 निकालो, कितने रहे? 90, उसमें से 7 निकालो, 99 कितना? 86, उसमें से 7 निकालो, 79, उसमें से 7 निकालो, 72. You go on, 0 तक लाया. When you are calculating, you are using your logical brain. So you go in beta immediately. दादी इन सब सिचुएशन में दादी वॉज इन डेल्टा, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दादी। तो साइंटिस्ट को लगा कि हमारी मशीन खराब हो गई, सो दे पुट कंट्रोल सब्जेक्ट्स एंड दे फाउंड दैट नहीं मशीन बराबर है, इट इज दादीज पावर, एंड देन दे गेव हर अवार्ड मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड। दिस इज द अवार्ड रिसीव्ड बाय दादी। अभी हमारे पास ये आ रहा है कि आप भी इसमें जा सकते हैं विथ प्रैक्टिस ऑफ कोर्स। I did some EEG studies on some of our practitioners and I saw कि हम इसमें जा सकते हैं। And this is Dr. Selva Murthy who came to us. He gave a beautiful definition of Raj Yoga Brahma Kumaris. It is the communion of inner light with the supreme light. This is inner light, this is supreme light. आप इस स्थान पर आए हो ना, इसके फाउंडिंग फादर ये है ब्रह्मा बाबा। इन्होंने ये अनुभव किया कि मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य शक्ति यहाँ रहते हूँ। यहाँ से आप होल्ड करोगे ना तो इट विल कम टू हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमको सबको पता है, पहले हम पिट्यूटरी ग्लैंड को समझते थे ना, पिट्यूटरी ग्लैंड इज कंट्रोल बाय हाइपोथैलेमस, बट हाइपोथैलेमस इज कंट्रोल बाय व्हाट? इट इज दैट मेटाफिजिकल लाइट। तो जैसे आत्मा का पिता है, शरीर का पिता है, वैसे आत्मा का पिता परमात्मा, जिसको हम कहते हैं शिव बाबा। तो शिव बाबा के साथ कनेक्ट करना। मैं और एक प्रश्न हमारे मेडिकल विंग से सभी मेडिकल कॉलेज में पूछा जाता है कि वी कॉल आवर सेल्व्स ह्यूमन बींग। ह्यूमन हैज़ कम फ्रॉम द रूट वर्ड ह्यूमस। ह्यूमस माना सॉइल। सॉइल में क्या क्या है? नर्वस, स्किन, रेस्पिरेटरी, ऑल दिस सिस्टम। बींग इज लाइफ फोर्स और द सोल, एंड बीइंग इज दिस नॉलेज, प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस, पावर। हमारा पूरा रिसर्च किसके ऊपर हुआ है? इसके ऊपर हुआ है, सॉइल के ऊपर हुआ है, सोल के ऊपर हुआ है। सॉइल है ना, मिट्टी के ऊपर रिसर्च करेंगे तो कहाँ जाएगा? ये मैं नहीं कह रहा हूँ। सुनंदा दीदी आस्क वन क्वेश्चन, अगर डॉक्टर्स बढ़ रहे, हॉस्पिटल बढ़ रहे, अगर समझो चोर, पुलिस, चोर और डाकू बढ़ रहे, इसका मतलब क्या होता है? पुलिस काम नहीं कर रहे ना। ऐसे ही अगर बीमारियां बढ़ रही है, हॉस्पिटल बढ़ रही है, इट्स अ साइन ऑफ हेल्थ और वी आर मिसिंग समथिंग।
प्लीज थिंक अबाउट दिस. मेरे पास तो डॉक्टर्स हैं हु आर सफरिंग. पॉरेल में टाटा हॉस्पिटल में मैं गया, डॉक्टर डी क्रूज, आई डोंट नो वेदर यू हर्ड अबाउट डॉक्टर डी क्रूज, वेरी सीनियर डॉक्टर. सो मैंने सर को प्रेजेंटेशन दिया विहासा का, तो सर ने बोला सर इमीडिएटली आ जाओ, सचिन चालू करो विहासा. मैंने कहा क्या हुआ सर? बोलते हमारे इधर एनेस्थेटिस्ट ने सुसाइड किया लास्ट वीक. सो ओवरवेलमिंग, आई सी दिस केसेस. मैं डॉक्टर्स का स्ट्रेस मैं रोज देखता हूँ. आई ट्रैवल 25 days a month. तो मैं देख रहा हूँ बहुत स्ट्रेस है डॉक्टर्स को. एंड यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी सिग्नल. सो हम इसके ऊपर फोकस करेंगे अभी. वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स विथ ओकेजनल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, बट वी आर स्पिरिचुअल बींग्स विथ ओकेजनल ह्यूमन एक्सपीरियंस. जस्ट रिवर्स करो. आप सब अच्छे हैं या खराब है? अच्छे हैं या नहीं है? हाँ या ना? जो समझते हैं मैं बहुत अच्छा हूँ हाथ खड़ा करो. मैं बहुत अच्छा हूँ. You know what is the commonest lie spoken all over the world? I'm fine. This is the commonest lie spoken all over the world. तो अभी आपने सच बोला या झूठ बोला? Think about it. हाँ, क्या बात है. मला कन्फ्यूज करू नका, मी अगोदरच कन्फ्यूज आहे भरपूर. It is very complicated statement. झूठ को सच बोला. So think about it. It's a state of mind. How you are feeling all the time. ये जो आपका feeling है ना, that is very important. Feeling is very important. जितना आपकी feeling positive है all the time, your healing will start. आपकी healing feeling से होती है. I work in emotional healing. तो उसमें हम यही बताते हैं कि आपकी feeling को positive रखो all the time. It is very difficult, but practice से कर सकते हैं. सो हम अभी कनेक्ट करने वाले, बैठे बैठे आप ऐसे कनेक्ट करोगे विद द ओशियन ऑफ लव, पीस, ब्लिस एंड हैप्पीनेस. परमात्मा ये लाइट है, हु इज ओशियन ऑफ पीस, लव एंड ब्लिस, हैप्पीनेस. आप करना चाहेंगे अनुभव? जस्ट वन साइंटिफिक स्लाइड एंड देन विल गो इनटू द डीप. हैव यू हर्ड अबाउट दिस पर्सन? सॉरी, हर्बर्ट बेंसन. ही वॉज अ पायनियर ऑफ माइंड बॉडी मेडिसिन, हाउ माइंड अफेक्ट्स द बॉडी. He is a physician from Harvard. और इन्होंने क्या किया, TM मेडिटेटर्स, TM आपने सुना है, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन. तो उस समय वो महर्षि महेश योगी गए थे वहाँ पे, तो उनके पार्टिसिपेंट पे इन्होंने रिसर्च किया ये कैसे मेडिटेशन काम करता है. एंड देन he wrote a beautiful international bestseller book. The name of the book is Relaxation Response. और उन्होंने क्या कहा, ऑल द बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन इज बिकॉज ऑफ रिलैक्सेशन. जितना आप डीप रिलैक्सेशन में जाओगे उतना आपके बॉडी पैरामीटर्स रिवर्स हो जाएंगे. तो अभी हम वही करने वाले हैं. इसमें बहुत कुछ कहा जा सकता है. आर यू रेडी? करेंगे अनुभव? मैं ये मैकेनिज्म बाद में बताऊंगा. लेट्स गो इनटू द एक्सपीरियंस. सॉफ्ट म्यूजिक. एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मोबाइल किसके किसके पास है? सर रॉन्ग क्वेश्चन. विचारना भाई. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या करना पड़ेगा? हाँ, ऑफ. मैं आजकल ऐसे बोलता हूँ, हिम्मत है तो ऑफ करके बताओ. आई कैन अंडरस्टैंड, सत्य है. सो साइलेंट इज ओके, क्योंकि डॉक्टर्स का लाइफ है ना. इमरजेंसी आता है कोई केस पर, सिर्फ वो वाइब्रेट नहीं हो, जूम ऐसा नहीं बजना चाहिए. बॉडी से दूर रखो, बॉडी को टच नहीं करना चाहिए. हम अभी वो देखेंगे अल्फा, थीटा, डेल्टा तक जाएंगे. और डेल्टा में जा रहे हैं उसका प्रूफ, आप बिल्कुल वेटलेस हो जाएंगे. आप वेटलेस हो जाएंगे, एकदम वेटलेस. अभी आपका वजन अगर समझो 60, 70, 80 किलो है, उस समय फ्यू ग्राम्स जैसा हो जाएगा. आप में से कुछ लोग सोने वाले हैं. नथिंग रॉन्ग. सो झोपा, खराटे मारतील, काही काळजी नाही करायची. म्युझिक असतं प्रत्येकाचं. काही लोकांना खोकला येणार, समवन विल कफ. हां, काही लोकांना बोलल्याबरोबर येतो खोकला. पर खोकला काय येतो, कफ रिसेप्टर्स आर एक्टिवेटेड. आपका ब्रीदिंग एकदम कम हो जाएगा. 16, 14, 12 देयर इज समाधि स्टेट, नो थॉट स्टेट ना. कुछ लोग पहुंचते हैं, एकदम रुक गया ना तो भीती वाटते, आहे का गेलो.
At that time, your cuff receptors are activated. I azon. So it's a reminder to you. Okay, sit comfortably. Yes. और किसी का गलती से बजा भी ना मोबाइल तो डिस्टर्ब नहीं होने का. I'll check. ओके, सिट कंफर्टेबली. अगले 5 मिनट तक आपको केवल मेरा आवाज़ सुनाई देगा, केवल मेरा आवाज़. वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस राजयोगा मेडिटेशन. पहले हम अपने आप को शरीर से डिटैच करेंगे, सोल कॉन्शियस होंगे यहाँ पे. सेकंड स्टेज में हम आकाश से, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, जिसको भी आप मानते हो, उससे एनर्जी लेंगे. वो एनर्जी अपने बॉडी में फैलाएंगे. वीडियो दिखाएंगे ज़रा, क्योंकि इनको विजुअलाइजेशन थोड़ा. एस्केप करो, एस्केप द प्रेजेंटेशन. आप ये वीडियो को देखेंगे, सॉरी, हाँ, मिनिमाइज करो. मेरे पेन ड्राइव में वीडियो है, कॉपी किया है. हाँ हाँ, नहीं उसमें नहीं. देखना, दिस इज व्हाट हैपेंस. दिस इज अ वीडियो फ्रॉम something else, space age meditation. This is a meditator who has created video from Bangalore. इस वीडियो का विजुअलाइजेशन आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन योर बॉडी. प्ले नहीं हो रहा है. चालू हो गया, आवाज आ रहा था. जस्ट वॉच. ये लाइट ऑफ करना, ऑडियो देना. सी, दीज आर द ब्लॉकेजेस इन योर सटल बॉडी, नॉट इन फिजिकल बॉडी. हाँ, दीज रेड पॅचेस. एखादा व्यक्ती डोक्यात गेलो की डोकं दुखायला लागतं, शोल्डर पेन. So this energy starts flowing and removes the blockages in your subtle body. पंचकोश जो हमने देखे थे. And just stop here, stop. बैक जाके स्टॉप करो. You have not done it. पीछे जाके स्टॉप करो जहाँ मैं बोल रहा था. हाँ आगे, हाँ बस यहाँ स्टॉप करो. नहीं, बैक इधर स्टॉप करो. चलो, मैं आपको यही बताना चाहता था कि वो जो पूरा लाइट से भरा हुआ शरीर है ना, दैट इज़ वेयर द हीलिंग अकर्स. वहाँ पे हीलिंग आपका होता है. दे आर नॉट एबल टू. नहीं, वीडियो चालू है बैकग्राउंड में, उसको क्लोज करो. ओके, समझ में आया. बेसिकली एक एनर्जी आपके अंदर आएगी और वो एनर्जी आपके माइंड बॉडी के अंदर ब्लॉकेजेस है, इसको ओपन करेंगे. And then you will go into that light stage. You will feel कि दीपक ही दीपक मावळल्या ज्योती. ये जो अवस्था है, माऊलीने जे सांगितलेलं, ती अवस्था तुम्ही अनुभव करू शकता. ऑडियो निकाल दो इसका. ओके, ठीक है. सो आई विल गो इन टेक यू. मैं 2 शब्द ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा, रिलैक्स एंड लेट गो. रिलैक्स बोलते ही शरीर को हल्का छोड़ देना, ये हमने पकड़ के रहा है, उसको लेट गो करेंगे. माइंड में थॉट चलेंगे, उसको भी लेट गो करेंगे. मैं आपको कमेंट्री दूंगा, आप उसको फील करते जाएंगे. लाइट्स दिखाना, लाइट्स. हाँ, ठीक है. ओके, सिट कंफर्टेबली. गर्दन और कमर एक लाइन में. आप इसी सेशन के लिए यहाँ पर आए हैं, ऐसे आप समझो. दिस वॉज योर टारगेट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस, दैट यू आर हीलिंग योर सेल्फ. अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे. अगले 5 मिनट तक आपको केवल मेरा आवाज़ सुनाई देगा, केवल मेरा आवाज़. यू नीड नॉट लुक एट मी, जस्ट क्लोज योर आइज. धीरे धीरे
Feel the vibration in this hall. This is increasing. Very good. हमारे कानों के अंदर इतनी शक्ति है, we can catch the breathing sound of the person sitting next to us. Very good. Catch the breathing sound of the person sitting next to you. Become aware. आपकी एकाग्रता बढ़ते जा रही है. धीरे धीरे चारों तरफ से ध्यान हटाकर अपना संपूर्ण ध्यान अपने शरीर के ऊपर एकाग्र करेंगे. Focus your entire attention on your physical body from head to the कौन सा भाग भारी है, टेंशन में है, उसको महसूस करेंगे. Feel the tension in the muscles of your physical body. Is it head, neck, shoulder, back, chest and abdomen, limbs? Feel the tension and release the tension. Relax, relax, let go your body. Relax, calf muscles, relax. You're feeling very light and peaceful. Thigh muscles, knee joint, hip joint, below hip, your both the lower limbs are relaxed. Relax, let go. You're feeling very light and peaceful. Move ahead. Feel the tension in the muscles of the back, lower back, upper back. Feel the tension and release the tension. Relax. Beautiful. Chest and abdomen. Feel the tension and release the tension. Relax. Your both the upper limbs are also relaxing. Shoulder, arm, elbow, forearm, wrist, fingers. Excellent. Relax. Let go. Neck muscles, facial muscles, forehead, eyebrows, eyeballs, lips, chin. Relax. From head to the toe, your entire body is in a state of deep relaxation. Relax, let go. You will go in much deeper stages. आप और हल्के होते जाएंगे. 1 से 10 में उल्टा गिनूंगा. जैसे 10 से 1 की तरफ आऊंगा, आप और हल्के होते जाएंगे. 10, 9, 8. You are going in deeper and deeper stages of relaxation. 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. You are totally relaxed and peaceful. शांत. ध्यान दो आंखों के बीच में. विजुअलाइज करेंगे एक सुंदर सितारा चमक रहा है. A beautiful, brilliant white star shining in the center of the forehead. और आप ये दिव्य प्रकाश हो, शरीर से बिल्कुल अलग हो. ये शरीर भारी है लेकिन आप बिल्कुल हल्के हो. You are the master of this body. शरीर के मालिक हो आप. विजुअलाइज करेंगे जैसे वीडियो में दिखाया था, आकाश से परमात्मा, गॉड, अल्लाह, ईश्वर जो कि लाइट है, आपको आशीर्वाद दे रहा है. एक ब्लू कलर की लाइट आकाश से आपके तरफ आ रही है और आपके मस्तक के द्वारा आपके संपूर्ण शरीर में फैलते जा रहे हैं. Visualize this light is entering your body through your head, entering your physical body और पूरे शरीर में फैलते हुए जा रहे. हेड, नेक, चेस्ट, एब्डोमेन, upper limb, lower limb, your entire body is filled with this divine light. आपका पूरा शरीर इस दिव्य शक्ति से भरपूर हो रहा है. You are becoming very light and peaceful. शांत, relax and peaceful. शांत.
Slowly, without moving your body, just open your eyes and feel that even with eyes open, I can maintain this relaxed state of mind. Slowly, without moving your body, just move the fingers and feel that even with the movement of the fingers, I can maintain this relaxed state of mind. This is my original nature. My original nature is peaceful. I'm feeling very light and relaxed. Slowly, come back to the original stage and relax. Come back to the original stage. And good morning. Those who have not come back, I give them command. I will say 1, 2, 3 in reverse order. As I say 1, you will open your eyes. 3, 2, and 1. You are back to the normal. You will open your eyes and you will feel very fresh. Okay. किसको किसको हल्का लगा? Raise your hands. हल्का लगा? You felt good. Let him sleep. Don't disturb him. Sleep. We are deprived of sleep. So when we go into the deep relaxation, we go naturally into. He may be in theta stage now. पेन गया किसी का बॉडी में का पेन गया? Yes, which pain? नेक पेन. शोल्डर पेन गया? हेडेक गया? हेड है ना? हेडेक गया. Why this happens? आपका कौन सा गया? Ankle pain. See why this is a painkiller. Endorphins. We have this within ourselves. These are all release. अगर मैं आपका blood अभी withdraw करूँ, you will get lot of relaxation hormone. सर कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है? ये तो केवल 5 मिनट कराया. आप सोचो अगर आप 1 घंटा इसमें बैठते हैं ना, you can open your body parts which are blocked. क्या हो गया? फॉरवर्ड नहीं हो रहा है? मेरे पास टाइम है अभी और घंटी बजा नहीं है. सॉरी गया. हाँ, एक्चुअली इट्स अ बिग फिलॉसफी. आप 7 डेज कोर्स किसने जिन्होंने ब्रह्मा कुमारी का 7 दिन कोर्स नहीं किया है, ऐसे कितने लोग हैं? 7 डेज कोर्स. आपको लगता है इसको जानना चाहिए? 1 घंटा आप इंटरेस्टेड है तो मैं मैकेनिज्म थोड़ा बता दूं, क्योंकि सिस्टर्स मे नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन दिस. दीज आर ऑल ब्लॉकेजेस इन आवर सबकॉन्शियस माइंड, है ना, हेवीनेस. और जैसे हम मेडिटेशन करते हैं ना, ये ब्लॉकेजेस ओपन होते हैं एंड वी फील वेरी लाइट. दिस इज व्हाट हैपन्स. दिस इज अ सोल विद ब्लॉक्स. रिलैक्सेशन एंड मेडिटेशन क्लीन हो जाता है अंदर से. यू फील वेरी लाइट एंड पीसफुल. ये स्टेट आती है और हमारे दोनों ब्रेन में बैलेंस आने लगता है. एंड दिस इज व्हाट ब्रह्मा कुमारीज यूनिकनेस. पीपल टॉक अबाउट सबकॉन्शियस माइंड. सबकॉन्शियस से आगे है सुप्रा कॉन्शियस, जो हमारे अनादि संस्कार है. जब आपके अनादि संस्कार जागृत होते हैं ना, आनंदा से डोही आनंद तरंगा. आई कैनॉट डिस्क्राइब दैट स्टेट. इट्स अ ब्यूटीफुल स्टेट. आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं. आई एम नॉट गोइंग इन टू डिटेल ऑफ दिस. ये मैं थोड़ा एडिक्शन के बारे में बता. दिस पर्सन वॉज 40 years ही वॉज एडिक्टेड. एक दिन में छोड़ा 2 पैक अल्कोहल, 2 पैक सिगरेट, 25 टोबैको, गैम्बलिंग एंड नॉन वेज. मैं एक डॉक्टर का स्टोरी हमेशा सुनाता हूँ, अभी भी सुनाऊंगा. मेरा एक क्लासमेट, वेरी गुड डॉक्टर्स, हॉस्टल में रहने वाले, सब आदतें लग जाती है. और रोरिंग प्रैक्टिस. ही यूज्ड टू सी 200 पेशेंट्स. You can imagine 200 patients, but हर 10 पेशेंट के बाद में I was shocked. मैंने कहा ये अच्छा नहीं है. तो I went to him. मैंने कहा यार तू डॉक्टर हो के तंबाकू खाता है, तुम्हारे वजह से हमको सुनना पड़ता है. तंबाकू क्यों खाता है? उसको गुस्सा आया. बोला सचिन खबरदार इसको तंबाकू बोला तो. मैंने कहा क्या हो गया? तंबाकू को तंबाकू ही बोले. बोला नहीं ये तंबाकू नहीं है. मैंने कहा क्या है? बोला ये है चैतन्य चूर्ण है ये. He was Marathi, that's why I'm sharing it here. ते चैतन्याच्या रथामधून प्रकाशाच्या वेगाने काम होतात. खबरदार सिगरेट बोला था.
मैंने कहा अभी क्या होगा? बोले ये सिगरेट नहीं है। मैंने कहा क्या है? ये गए वो मराठी और संस्कृत ने, ये सिगरेट नहीं है, ये है श्वेत वस्त्रधारिणी धूम्रपान दंडिका। मैंने कहा श्वेत हो या आपको सबको पता है, हमको सीखा इट्स अ स्लो पॉइजन, धीरे धीरे खत्म कर रहा है तेरे को। बोला हाँ सचिन मेरे को भी कोई जल्दी नहीं, मैं भी धीरे धीरे ही मरना चाहता। वेरी डिफिकल्ट टू। तो मैंने कहा मैंने कहा जब मेरा दिल करेगा मैं लूँ। तेरे को क्या मिलता है बता? यू नो व्हाट ही सेड सचिन, जैसे ही मैं लेता हूँ ना किक मिलती है। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय किक? बोलता है जैसे मैं लेता हूँ शांति हो जाती है। मैंने कहा बैंग ऑन द टारगेट। तुझे सिगरेट की ज़रूरत नहीं, तुझे शांति की ज़रूरत है जो तू सिगरेट में ढूंढ रहा है। अगर सिगरेट में शांति होती तो ब्रह्मा कुमारी भी बोलती ओम शांति नहीं, सिगरेट शांति शांति, सिगरेट पियो शांत हो जा। मैंने कहा बोला क्या करूँ? बोला देख तू मेडिटेशन कर, हो सकता है तेरा छूट जाए। एंड दैट डॉक्टर 22 साल का नशा उसने 7 दिन के राजयोगा से पूरी तरह से छोड़ दिया। इज नाउ फ्री ऑफ एडिक्शन। सो व्हाट इज द मैकेनिज्म? हम सबको क्या चाहिए? खुशी चाहिए, शांति चाहिए, प्यार चाहिए, यस और नो? अभी जब वो हमको मिल जाता है ना, हमारी सब डिपेंडेंसी खत्म हो जाते हैं। दिस इज व्हाट वी हैव सीन इन द स्टडीज। मेरा भी कुछ, ये तो भाई साहब ये डॉक्टर मनोज मतानी तो गोल्ड मेडलिस्ट है, आम्ही तो मोठे दिवे लावलेले आहेत। जस्ट 2 मिनट्स, मेरे पास 5 मिनिट है। ये मेरी मार्कशीट है 11th स्टँडर्ड के 88। आई वडिलांना वाटलं मुलगा जरा हुशार दिसतोय, त्याला डॉक्टर बनवावं। And I got out of 100 34 marks in English. This is first subject. 34 म्हणजे पास की फेल? मला 34 मिळाले, तुम्हाला एवढा आनंद का होतो है? हाँ नहीं, मैं जानबूझ के स्कूल कॉलेज में बच्चे खुश हो जाते हैं, डॉक्टर पण आपल्यासारखेच आहेत। मेरे टीचर अच्छे थे, उन्होंने ग्रेस मार्क दिया, मला ढकललं आहे। 12वीत गेल्यावर कळलं की नाउ इफ आय नीड MBBS आय मस्ट गेट मिनिमम 91%, 90% मार्क्स, ओपन कैटेगरी। सो आई वर्क हार्ड, आई मेडिटेटेड और मुझे 12th में 91% मार्क मिले, स्ट्रेट अवे इनटू MBBS। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आई एम शेयरिंग, दिस इज मेडिटेशन का मैजिक। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा MBBS का मार्कशीट है। एक कदम आगे, आई एम फेल्ड इन MBBS। किती पोचलेले, अभी मेरा कोई गलती नहीं था, थियरी में फेल किया था। सो आई अप्लाइड फॉर रिवैल्यूएशन। वो यूनिवर्सिटी वाला बोलते हर लड़के को लगा तू तो 2 सब्जेक्ट में फेल है, मेडिसिन एंड सर्जरी, तू जाओ फिर से अपियर हो। आई सेड पर मेरा पेपर अच्छा है। बोला कोई नहीं, 2 पेपर पे कोई पास नहीं होता है। आई वॉज सैड, बट मैंने वो सुसाइड बिसाइड कुछ नहीं सोच, मुझे वापस पास कर दिया गया। ये ताली बजाने जैसी चीज़ नहीं है। I lost 6 months of my life because of a mistake of an examiner. Are you getting? अब मेरा क्या नुकसान हुआ? Class is permanent, form is temporary. Now watch. I am the national coordinator of My India Addiction Free India campaign, inaugurated by Pratibha Patil, who is the president, है ना? And I have trained 18,000 people across India on addiction, है ना? They are working in all the states of India. This is award we received it you know this person is from Pune. हाँ, डॉक्टर अनिल अवसट है ना। सो दिस 2012 वी आर गेटिंग कंजिक्यूटिवली 7 अवार्ड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। दिस इज 13। हु इज दिस पर्सन? एक्टर, मराठी एक्टर सिद्धार्थ जाधव। सो वी हैव बीन गेटिंग दिस अवार्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। दिस इज आदर्श डॉक्टर अवार्ड। दिस इज अगेन एट मुंबई वी रिसीव्ड। Consecutively 7 years we are getting the award on de-addiction from government of Maharashtra. So मेरा क्या नुकसान हुआ? I launched this global project at Mount Abu. She is Mrudula Sinha of Goa, governor. This is Mount Abu Hall. And this project is now successfully going in 180 countries of the world. Brahma Kumaris Raj Yoga meditation, है ना? And they are also using it. This program is aired in 40 countries of the world. This is the study of which I am this is published in Indian Journal of Private Psychiatry, Effect of Raj Yoga on Tobacco. And this is our project, and what we saw is in Indian Heart Journal. You can open your arteries, block arteries, without angioplasty and bypass. So far we have finished 7,000 patients.
and angiographically documented. I have worked in this study also. So it is scientific. What I am showing you, it is scientifically evaluated. These are the angiographs. This is artery, 2 जगह पे block था, it has opened. Suman patient. ये patient को तो मैं भूल नहीं सकता. पांचाल 100% cut off RCA. तो वो आया and then he practiced and you see his artery is opened without any angioplasty, just lifestyle modification, diet, exercise and Raj Yoga meditation. So there are 7,000. So what is the advantage? It's a karma yoga. Person from any religion, caste, age, sex can do it. Practice with eyes open, scientifically proved, no specific postures worldwide. And that's it, Raj Yoga meditation. तो आपको लगता है आप राज योगा कर सकते हैं प्रैक्टिस? Yes? या करना चाहिए? करना चाहिए. कौन कौन करेंगे यहाँ से जाने के बाद? ठीक है. लास्ट में जाने से पहले मैं थोड़ा एक्सपीरियंस शेअर करूँगा. मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स, सी आय एम टॉकिंग 25 days a month. डॉक्टर क्या बोलते, सर तुमचं सगळं पटतं पण काय करू, मरायला पण वेळ नाही. एक डॉक्टरने बोला विष खायला वेळ नाही. वेन ही सेड विष खायला वेळ नाही, आय सेड खाऊ पण नका, आजकाल ओरिजिनल मिळत नाही. त्यांच्यासाठी ही स्टोरी आहे. वन इंजीनियर वॉज ऑन द 8th floor. वो नीचे से लेबर को बुला रहा था, उसका ध्यान नहीं जा रहा था, ऊपर से पैसे छोड़ा 50 रुपया, ये शायद उसको देखेगा तो आएगा. उसने 50 रुपये जेब में डाला. ही कंटिन्यूड हिज वर्क. बोला 50 का मैं 100 का छोड़ता हूँ. 100 का नोट छोड़ा, वो भी उठाया जेब में डाला. तीसरा 500 का छोड़ा, वो भी उसने जेब में डाल के अपना काम करता रहा. फिर उसको गुस्सा आया, उसने एक पत्थर लिया, ईंट ऊपर से फेंका, सिर पे गिरा. ऊपर देखा, इंजीनियर ने बोला तीनों नोट लेके ऊपर आ जाओ. भगवान भी हमको बिजी देख के ना नोट छोड़ता है. 50, 100. इमेजिन फॉर अ मोमेंट. और मनोज मतनानी की लैंग्वेज में विजुअलाइज, अगर मैं 500 का नोट हूँ और मुझे आप लोगों के लिए भेजा है यहाँ पर, अगर इस नोट का कहना नहीं माना, फिर मत बोलना भगवान ने मेरे साथ ऐसा. बराबर है. See, it is your life, you have to take a call. ठीक है ना. थोड़ा समय निकालो अपने लिए. निकाल सकते कि नहीं? See, the moment you come here for this conference, it means you have priority. बराबर है ना. It's just a question of priority. और हमारा एक्सपीरियंस है, जितना मेडिटेशन करेंगे उतना हमारे पास टाइम ज़्यादा होता है. We can manage our patients in a beautiful way. ठीक है. So best of luck to all of you and thank you very much for listening to me. ओम शांति. अच्छा लगा तो अच्छी तालियां बजाओ अच्छी तरह से. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. So what to say about this session, isn't it? It was knowledge, it was experiential, it was humor. So it was really a package. So really thank you, Dr. Sachin. And right now we have a very special guest, and I would like to welcome him, Ravindra Kutte. I would like you to come on the stage, please. And he is the IMA President-elect of Maharashtra. He's an experienced consulting surgeon from Sri Rampur. I would like you to please come on the stage. Can we have our sisters to please bring the welcoming tilak, a plant and the gift? So we would like to welcome Ravindra Kutte with a tilak, which will be given by Rukmani Benji. This tilak is really a reminder of who I am. And now we have Usha Ben to give
a small gift to our guest, and also a beautiful tulsi plant. And he's going to share with us his experience when he of Brahma Kumaris and how he has been to Mount Abu. So I would like to invite Dr. Ravindra Gutti. Namaskar, Pranam, and I am extremely sorry for attending late. Sorry for my delay. Respected Sunanda Didi, Dr. Sachinji Parab, Dr. Meenakshi Deshpande Madam, President IMA Pune Branch, Dr. Kshirsagar Madam, Secretary IMA Pune Branch, all the respected delegates. Just now I had an opportunity to listen to Dr. Sachinji Parab, and I feel highly relaxed with his presentation. The definition of WHO about health is absence of disease or ailments in the body. But sorry to say, this is not the complete definition of health. It is well-being at physical, mental, social, and spiritual level. Everybody knows about first two aspects, physical and mental. What about social and spiritual health? That is taught here. I proudly say that is being practiced here. Our books about modern medicine, they taught us about pathology and then the management of the disease. There is very little concern about the preventive aspect of the disease, or very, very little about the spirituality and the nutritional aspect of the tissues. The new health challenges in front of us are non-communicable diseases, we call as NCD. Once upon a time, there were infectious diseases like the typhoid and the cholera and so many, but present diseases, illnesses, we call it as syndrome X disorders, or all metabolic diseases. And if I enumerate, like myocardial infarction, coronary artery disease, diabetes mellitus, cancer, arthritis, dementias, Alzheimer's, and all the neurological problems. These are the challenges in front of us. When we face some stress, disease, there are two reactions which are happening in our body, in our brain: fight or flight, लढा किंवा पळा. आणि ज्यावेळेस लढायचं असतं, we require strong immunological power that is given on this platform.
If you see the Western countries, we call their 20 years, 25 years, 50 years in front of us. They are all technologically advanced countries, but the challenges in front of these people, anxiety, depression, loneliness, frustrations, dementias, Alzheimer's, Parkinson's, and so on. If you see the Japanese population, 60% of people, they feel loneliness. That is the biggest challenge. We have experienced death or any moribund condition of very near and dear to the person leads to severe depression and followed by cancer. It has seen in many personalities or individuals in our surroundings. And these cancers, they are deadly cancers like liver cancer, pancreatic cancer, and so on. Modern medicine, we have got solution about the disease, but for further continuation, we require spiritual support. If there is a case of oral cancer, we operate it. But if he is not followed properly, if he is not given proper love and affection, or if he is not provided by naturopathy or spiritual center, there is high relapse rate about the cancer. So definitely not treating the disease, but we have to take a follow-up and we have to prevent it by increasing, and that is what the concept of spiritual health. Our body has few vital organs: brain, liver, lung, heart and kidneys. And the nature has given a very good potential. We only use 10% of the physiological function of that part. The brain has numerous sulci and gyri, but in routine life, day-to-day life, we only use 10% part of our brain. We use only 10% part of our lung. And the spiritual background, platform, teaches us to reach to the highest potential. And that is why we have seen the spiritual health. It also leads to normalizing the basic metabolic rate, BMR. So if you see the normal pulse rate, anywhere between 72 plus minus 10, with spirituality, it comes to say 40, 30, even below that. That is possible with spiritual medicine. Our life was 37, 36 during independence time, that is 1947. And in 2022, the average lifespan is 69 years. You see many of the people, they live for 80s and 90s, few reaching hundreds also. But on sacrifice of morbid conditions, and the morbid conditions I
enumerated like diabetes, hypertension, coronary artery disease, and so on. I had an opportunity to visit to Madhuban, Mount Abu Road. And I'm thankful to Sachinji Parab for his kind invitation and arranging my stay, I can say comfortable stay. I stayed there for 3 days and the program was properly scheduled. We used to have meditation in the morning, relaxing exercises, spiritual sessions, and the sessions were highly motivated, highly inspirational. And in day-to-day life, there are so many stress busters in our life. So if you go to such places, away from the home, away from the work, away from routine life, definitely it gives a different sort of energy which helps us to work in better way. I saw there's a big convention center. It's of kind. I have never seen that big convention center accommodating almost 25,000 people at one session. I saw the biggest solar energy plant there, totally which covers almost all of the electricity required by the center. In fact, they supply energy to the government. So I definitely admire the work at Mount Abu. The time was very short. I don't had an opportunity to go to the highest center, Mount Abu, but I promise you next time I will going to come and visit the top center. My routine is I work almost 16 hours a day, minimum 14 to 16 hours a day. Being a surgeon, anytime, any odd hours, I have to work, I have to attend the patient. As Madam knows, I work for the Indian Medical Association and I visited 36 districts in 1 year during COVID pandemic also. Traveled almost 80,000 kilometers. So everywhere it is a stressful day-to-day life. And during that COVID period, I also completed my LLM with highest rank. I completed my postgraduate degree in bioethics with, I can say, good rank. We have got junior doctors network. And you know, junior doctor network, they handle all the emergencies and routine patients at government and corporate hospitals. They work for 16 to 18 hours. If you go to any hospital, Sassoon, KM or Sion, Nair Hospital, every time these junior doctors, they are working for the society. They have got different problems of living, eating, working, not of good standard. And again, it is a stressful life. Why I am highlighting? Because they are providing services with odd health issues. या ठिकाणी मी आता एक स्लाइड बघितली, ब्रेन. आणि आम्हालाही मेडिकल कॉलेजमध्ये शिकवताना आणि सर्वसामान्य जनतेला सुद्धा मोठा मेंदू, छोटा मेंदू आणि मेरुदंड इथपर्यंत आत्तापर्यंत माहिती होती. बिग ब्रेन, स्मॉल ब्रेन, स्पायनल कॉर्ड. परंतु आज सगळं बदललेलं आहे. We have to concentrate on little things. अमायगडाला हा ब्रेन मधला एक पार्ट आहे.
अँग्युलर गायरस हा एक ब्रेनमधला प्रॉब्लेम आहे, पार्ट आहे. बेझल गँग्लिया अगेन दे आर सिच्युएटेड डीप इन द मिड ब्रेन. आणि याच्यावर आता अभ्यास चालू आहे. These parts, their function, it is related to the love, anger, emotions. And then the researchers, they have proved the development of these particular parts that is going on in childhood. And if the children are not handled properly at that stage, if there are family disturbances, if there are battered baby syndromes, if they live in some hostel life away from the parents, then chances of getting these children criminals and terrorists are very high. So we have to take care of these children in their growing age, whether they are properly nurtured or not. And the neuroethics, neurophysiology, they tell us that this is the age where there is a differentiation between a person who is going to be a good individual or a bad individual, and we have to take care of the children. मी या ठिकाणी एक उदाहरण सांगेल जाता जाता. आय विल नॉट टेक मच ऑफ युअर टाईम, दिस इज लंच आवर. आमचे एक डॉक्टर बावडेकर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, ज्यांनी आयुष्यभर ऑर्थोपेडिक कॅन्सर रिलेटेड प्रॉब्लेम्सला वर अभ्यास केला, उपचार केले. विशेष करून एखाद्या लॉंग बोनचा कॅन्सर असेल तर तेवढाच पार्ट काढून, किंबहुना तो भाग काढून त्याच्यावर प्रक्रिया करून तोच भाग परत जोडून अशा प्रकारे काम केलं. आणि दॅट इज इट हॅज गिवन हिम अ इंटरनॅशनल रिकग्निशन. परंतु वन फाईन डे, आय विल नॉट से फाईन डे, वन डे he himself was diagnosed as suffering from cancer of the stomach. का ज्याने आत्तापर्यंत दुसऱ्या रुग्णावर इलाज करून त्यांना कॅन्सरमुक्त केलं आहे, त्यांनाच एका दिवशी असं सांगितलं जातं की यू आर सफरिंग फ्रॉम कॅन्सर ऑफ द स्टमक. कशी रिॲक्शन झाली असेल आपण इमॅजिन करून बघा. त्यांची मुलं हे सुद्धा परदेशात त्यावेळेस शिकत होती, परंतु शास्त्राप्रमाणे एनी कॅन्सरस ग्रोथ हॅड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी. आणि त्यांचं कॅन्सर स्टमकचं भलं मोठं ऑपरेशन हे बॉम्बे हॉस्पिटलला झालं. आता त्यावेळेस ॲडज्युव्हंट थेरपी हा एक महत्त्वाचा भाग असतो. रेडिएशन, केमोथेरपी. ऑपरेशन सक्सेसफुल झालं, परंतु विथ केमोथेरपी कदाचित त्यावेळेस केमोथेरपी त्यावेळेस फार डेव्हलप झालेले नसेल, किंवा ड्रग्स नवीन मॉलिक्युल्स त्यावेळेस आलेले नसतील, सेफ मॉलिक्युल्स आलेले नसतील, परंतु इट हॅज गिवन इनटवर्ड रिॲक्शन्स, सिव्हिअर गॅस्ट्रोइंटेस्टायनल डिस्टर्बन्सेस, and then he refused to take chemotherapy. But he has not refused to take support of another pathies. आणि मग त्यांनी 21 वेगवेगळ्या उपचार पद्धतींचा अवलंब केला, ज्याच्यामध्ये स्पिरिच्युअल हेल्थसुद्धा एक महत्त्वाचा भाग. आणि या ठिकाणी मी सांगेल की ही लिव्ड फॉर 11 years. त्यांचा जो कॅन्सर होता त्याच्या ब्लॉक्स हे इंग्लंड आणि जापानला पाठवण्यात आले, आणि इट वॉज डायग्नोज ॲज हायली ॲनाप्लास्टिक कॅन्सर. इन स्पाईट ऑफ दॅट ही सर्वाइव्ड फॉर 11 years, आणि ही एक्सपायर्ड नॉट ड्यू टू कॅन्सर बट ड्यू टू कार्डियक एलिमेंट. सो
On behalf of IMA, I declare a few things. There is a spiritual subcommittee of Indian Medical Association at state and national level. Definitely we will like to work hand in hand with our association. That is one. IMA Maharashtra State, our annual conference is at Shirdi between 17th to 20th of November 2022, and definitely we will be having one session on spiritual health. Third, IMA will association for anti-tobacco movement. Fourth, we have got medical student network and junior doctor network, and again there is a subject called as bioethics that also is concerned with our aim. And we invite on metabolic disease like cancer, diabetes, and the spiritual health. I heard few of the papers at Mount Abu, but we encourage from the students, from the society, from the researchers that many more research papers should come forward so that it will be evidence-based, authentic project for us to show how important is this platform. Thank you very much. Thank you. Thank you, Dr. Ravindra Kuti, for taking some time out from your busy schedule and really sharing valuable insights. So moving further, we're very close to the session. I have few announcements. I will announce here and there will be on screen as well. So to connect more information on the medical wing, you can visit our website, which is bkmedicalwing.org. We have also a conference in our headquarters at Mount Abu. So it's Medical Wing 46th National Residential Conference on Mind-Body Medicine from 2nd to 5th of September 2022 at it's one of the place where we call Global Auditorium Manmohini Complex. And this conference is meant to serve MD, MS, doctors and directors, deans of hospitals, medical institutions only. Also, like Sunanda Didi was saying about the Raj Yoga Foundation course, we encourage all participants to visit their local BK centers to learn more on Raj Yoga meditation. For those who cannot visit, to your closest, which is good to actually go to the center and do the course, but for any reasons, if you're unable, then we have arranged an online 7 days course from tomorrow, Monday 1st to Sunday 7th of August, online on Zoom, and the information is on the slide, and the time is from 7 to 8 a.m. The Zoom ID, if you would like to note down, there will be on the screen as well, but if you want to note down, its Zoom ID for the course is 9260, or you can take a screen, 9260-351-8967, and there is no passcode or no separate registration required. And all doctors who have visited this premises for the first time are requested to meet BK Puneet, which is the brother. Can you just wave? BK Puneet before or after lunch at the reception, just when you entered for registration, that's the place. If you're able to meet him for short 2 minutes video feedback, that will inspire the other doctors or professionals in this field. We also have a Jagdamba Bhawan channel. The program recording will be uploaded on the Jagdamba Bhawan YouTube channel. All registered members will receive an SMS or emails of the event link, which of course you can share it with others who were, for whatever reason, unable to attend. And for future events, in order for you to be added to a WhatsApp group, the WhatsApp number is 9881-302565. And also we have a very beautiful art gallery. It's near the parking where you were there,
where you will be heading for your lunch as well. There is beautiful an art gallery. So the campus has a beautiful digital exhibition with a very good spiritual knowledge. So maybe after your lunch you could visit, and also we have a very beautiful amphitheater. So please make the most of your visit. So moving further, we have with us Dashrath Bhaiji. Dashrath Bhaiji is a Rajyogi Brahma Kumar who has come in contact with Brahma Kumaris in 1966. And so he's a very experienced meditator. He's practicing Raj Yoga meditation taught in Brahma Kumaris for the last 48 years. He is Maharashtra Zonal Coordinator of the rural wing of Brahma Kumaris. So we have a different wings, and like medical wing, there is rural wing as well. He has delivered several speeches at many seminars and conferences. I would like to request Dashrath Bhaiji to come on stage. He has also delivered lectures on Raj Yoga on ETV Marathi. He organized a state-level national campaign from Kulu Manali to Goa and 12 Jyotirlingam Rath Yatra from Bhimashankar to Mount Abu. So we all can give a big round of applause to the brother. And one of the quality that I notice in him is like he's a very active person. You know, even I wouldn't say he's old, but you know, he's very active. I feel sometimes he's more active than me. So that's something, that power comes through practicing meditation. I would like to welcome. ओम शांति। आप सभी डॉक्टरों को देखने के बाद, आपका दर्शन करने के बाद मुझे एक संकल्प मन में चल रहा है। वो कौन सा संकल्प है कि अनेक बार मनुष्य जो है वो अपनी समस्याएं लेकर के डॉक्टर के पास जाते हैं, चाहे वो कोई फिजिकल हो, बीमारी की सारी समस्याएं लेकर के डॉक्टर के पास जाते हैं। परंतु अभी विचार चल रहा था कि अगर डॉक्टरों की कुछ समस्या है तो वो कहाँ जावे, समझा? डॉक्टरों की कुछ समस्या है तो वो कहाँ जावे? तो उनको ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में जाना चाहिए, समझा? ब्रह्मा कुमारी में जाना चाहिए, क्योंकि अपन कहते ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन माना मनुष्य हो गया और बीइंग माना आत्मा हो गई। तो डॉक्टरों का कनेक्शन वैसा आत्मा के साथ इनडायरेक्ट बहुत आता है। डायरेक्ट शरीर के साथ संबंध आता है, इनडायरेक्ट आत्मा के साथ संबंध आता है। लेकिन जिस प्रकार से आपको शरीर की एनाटॉमी का पता है, उस प्रकार से आत्मा के एनाटॉमी को जानना भी डॉक्टर्स के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि मनुष्य जो है, ह्यूमन बीइंग जो मनुष्य है, वो दो चीज़ों का मिश्रण है। एक है बॉडी प्लस सोल इज इक्वल टू ह्यूमन बीइंग। बॉडी और सोल से मनुष्य बनता है। दोनों में से एक भी एब्सेंट है तो वो मनुष्य नहीं होता है। अगर अभी हम सब बैठे हुए हैं, अभी हम सुन रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में सोल बैठी हुई है, इसलिए हम देख सकते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं। और जस्ट क्या हो जाता है, जिस सेकंड में वो सोल चली जाती है। कई बार ऑपरेशन थिएटर में जब पेशेंट को लेकर के जाते हैं तो कहते फलाना व्यक्ति ऑपरेशन के लिए गया है, फलाना व्यक्ति ऑपरेशन के लिए, फलाना पेशेंट ऑपरेशन के लिए गया है। और वहाँ अगर ऑपरेशन सक्सेस नहीं होता है तो फिर डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते टेक बॉडी आउट, मनुष्य को लेकर के जाओ, ऐसा नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? टेक बॉडी आउट, क्योंकि अभी सिर्फ बॉडी रही है और आत्मा उसमें से चली गई है। तो वो आत्मा की प्रेजेंस ही मनुष्य है, और हम आत्मा के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं, उसका हमें पता ही नहीं है। देखो, हर एक व्यक्ति, वर्तमान समय हर एक व्यक्ति को तान तनाव
टेंशन, ये रहता है ना, हर एक को रहता है, सभी को तान तनाव टेंशन है। लेकिन वो टेंशन को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, उसका सॉल्यूशन आज मनुष्य के पास नहीं है। और आपको हम बताते हैं कि यह जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, ईश्वर ने आकर के खोला हुआ ये विद्यालय है। और सारे मनुष्य आत्माओं के लिए ये विद्यालय परमात्मा ने खोला हुआ है। इसमें डॉक्टर भी विद्या ले सकते हैं, इसमें इंजीनियर भी विद्या ले सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी ले सकते हैं। हर एक के लिए परमात्मा ने ये विद्यालय खोला हुआ है। और हर एक आत्मा को अपनी अपनी, चाहे किसी का कोई बड़ा धंधा हो, धंधे में भी आने के बाद टेंशन आ जाता है। और आजकल ये जो कहा गया है ना, आज का जो टॉपिक है रिजुवेनेटिंग मेडिकल माइंड्स, तो ये रिजुवेनेट करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है आज के समय। मेडिकल फील्ड में बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं वर्तमान समय। मेडिकल में तो चैलेंजेस और चेंजेस बहुत ज़बरदस्त रीति से आ रहे हैं। इसलिए मेडिकल माइंड को रिजुवेनेट करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और साली मेडिकल वालों को ही सिर्फ रिजुवेनेट करने की आवश्यकता नहीं है, तो सारे वर्ल्ड को रिजुवेनेट करने की आज आवश्यकता है। क्योंकि सारा वर्ल्ड ही पिछड़ गया है, सारी दुनिया ही बहुत चक्कर में आ गई है, तो सारी दुनिया को रिजुवेनेट करने की आज बड़ी आवश्यकता है। और परमात्मा ने उसका बहुत सुंदर प्लानिंग किया हुआ है, बहुत सुंदर प्लानिंग परमात्मा ने किया है। अभी हमारे सामने जो होता है वो हम देखते हैं। आज इस दुनिया का परिवर्तन करने के लिए अनेक अणुबॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, केमिकल बॉम्ब अनेक बनाए गए हैं। विनाश की तैयारी तो दुनिया में चारों तरफ ज़बरदस्त हो चुकी है। आज अमेरिका, रशिया के पास एक पृथ्वी क्या 12 पृथ्वी नष्ट करने की पावर जो है, वो पावर आज अमेरिका के पास है। 8 दुनिया नष्ट करने की ताकत रशिया के पास है। तो ये दुनिया नष्ट करने की तो ताकत मनुष्य जमा करके रखी है मनुष्य ने, लेकिन रिजुवेनेट करने की ताकत क्या है? रिजुवेनेट करने की ताकत सिर्फ परमात्मा के पास है। और परमात्मा सोया हुआ नहीं है। एक तरफ अभी 3rd वर्ल्ड वॉर कभी भी हो सकता है, कभी भी शुरू हो सकता है, और वो शुरू होने के बाद कोई बहुत सालों तक चलने वाला नहीं है, बहुत सालों तक चलने की आवश्यकता नहीं है। कुछ समय में सारे वर्ल्ड को खाक करेगा, इतनी अण्वस्त्र की ताकत आज मनुष्य के पास है। तो जबकि दुनिया के विनाश की तैयारी, दुनिया के परिवर्तन की तैयारी हुई है, तो रिजुवेनेटिंग पावर जो है वो थोड़ी रहेंगी। परमात्मा तो आज वो काम कर रहा है। आज 8500 ब्रांचेस के द्वारा ब्रह्मा कुमारी के परमात्मा नए दुनिया के निर्माण का काम कर रहा है। हमारा टारगेट ही है कि नई दुनिया को निर्माण करना। कहते नर करे करनी तो नर का नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बन जाए। तो लक्ष्मी नारायण बनाने का काम ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय प्रैक्टिकल में कर रहा है। हम नई दुनिया की पूरी तैयारी कर रहे हैं और परमात्मा के श्रीमत के अनुसार ये परमात्मा का काम चालू हुआ है। 1936 को परमात्मा का अवतरण हुआ, आज 85 वर्ष हुए हैं। जब कार्य शुरू हुआ तो हैदराबाद, सिंध में 1-2 ही केंद्र थे, और अभी वर्तमान समय सारे भारतवर्ष में आप भारत की कोई भी सिटी हमको बताओ, भारत का कोई भी शहर हमको बताओ, हम आपको ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का एड्रेस देंगे। कोई भी भारत का शहर बताओ, ब्रह्मा कुमारी का एड्रेस हम आपको देंगे, क्योंकि परमात्मा का काम चारों ओर फैल चुका है। 8500 ब्रांचेस थ्रू आउट भारत में है। आज सारे देश में ये ईश्वरीय कार्य, यूनो में भी ये कार्य चल रहा है। यूनो में भी ब्रह्मा कुमारी को एक ब्लॉग दिया गया है, और यूनो की वर्ल्ड पीस ऑर्डर जो है उसमें एक ब्रह्मा कुमारी भगिनी को भी स्थान दिया गया है। तो परमात्मा का काम बहुत स्थान तक पहुंच चुका है।
अपने जो प्रेसिडेंट अभी चुन करके आए हैं तो वो भी ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के स्टूडेंट रहे, वो भी ब्रह्मा कुमारी की स्टूडेंट रही हुई है। तो इस प्रकार से परमात्मा नई दुनिया निर्माण करने का कार्य भी बहुत ज़बरदस्त रीति से कर रहे हैं, लेकिन आज अभी तक ये काम गुप्त रूप में चल रहा है। एक दिन ये भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। नाश करने की तैयारी परमात्मा ने की है, इस्लाम इसका मतलब यह नहीं है कि सब समाप्त होगा। वर्ल्ड साइकिल तो चलते ही रहने वाला है। बाकी अभी रिजुवेनेटिंग का टाइम है। देखो, कोई भी नई चीज़ हम मार्केट में लाते हैं, नई चीज़ मार्केट में लाते हैं तो धीरे धीरे यूज़ करते जाओ तो पुरानी बन जाती है। नई चीज़ यूज़ करते जाओ वो पुरानी होती है। तो नए का पुराना बनना ये सृष्टि का नियम है। नए का पुराना बनना सृष्टि का नियम है, लेकिन पुराने का नया बनता नहीं है। पुराने का नया बनता नहीं है, पुराने को नया बनाना पड़ता है उसके ऊपर प्रोसेस करके। वैसा ये स्टार्टिंग दुनिया बहुत महान थी, सत्ययुग था। एक धर्म, एक राजा, एक भाषा, एक सरकार था इस भारतवर्ष में। फिर सतयुग का त्रेता युग हुआ, त्रेता का द्वापर युग हुआ, द्वापर का भी कलयुग हुआ है। तो कलयुग का ऑटोमेटिक सतयुग होने वाला नहीं है। परमात्मा को यहाँ आकर के बहुत बड़ा काम करना पड़ता है। कलयुग के अंत में सतयुग के निर्माण का काम आज इतने वर्षों से चल रहा है। 6000 बहनों ने इसके लिए अपना जीवन सैक्रिफाइस किया है। किसके लिए? तो नई दुनिया लाने के कार्य के लिए। तो अभी हम आपको ये रिक्वेस्ट करते हैं, भले किस न किस बहाने से आप इससे जुड़ गए हो, परमात्मा से आपका कहाँ न कहाँ कनेक्शन जुड़ गया है, तो उसको अच्छी तरह से जान के लो, परमात्मा को अच्छी तरह से समझ करके लो और उससे अपने जीवन में सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता को प्राप्त करो। उसके द्वारा ही आपको सुख मिलने वाला है। देखो, आज पृथ्वी एक गुना है, पृथ्वी ये धरती एक गुना है, तो 3 गुना क्या है? पानी है। 3 गुना पानी है, तो भी पानी के लिए तरसते हैं ना। 1 गुना धरती है, 3 गुना पानी है, फिर भी पानी के लिए तरसते हैं। क्यों? कि वो 3 गुना जो पानी है वो कुछ काम का नहीं, वो कुछ काम का नहीं, वो तो खारा पानी है। खारा पानी कुछ काम का नहीं है। लेकिन खारे पानी को मीठा पानी बनाने की ताकत किसके अंदर है? हाँ, सूर्य के अंदर है। सूर्य ही एक ऐसी पावर है, सिर्फ सूर्य ही, भले आकाश में कितने भी तारे, ग्रह आदि कितने भी हो, सिर्फ सूर्य ही एक ऐसी पावर है कि जो खारे पानी को भी मीठा बनाती है और मीठा बना करके बादलों के रूप से वो धरती पर बरसती है और वो मीठा पानी से हमारा जीवन चलता है। तो जिस प्रकार से खारे पानी को मीठा पानी बनाने की ताकत एक सूर्य के अंदर है, उसे ही प्रकार से हमारे जीवन की दुख, अशांति, ये सभी मिटा करके हमें सुख, शांति प्रदान करने की पावर जो है वो सिर्फ एक परम पिता परमात्मा के पास ही है। और आज तक विश्व का इतिहास रहा है कि जब जब मनुष्य को पावर की आवश्यकता पड़ी तो उसने परमात्मा के साथ कनेक्शन रखा हुआ है। संत ज्ञानेश्वर जो थे, संत ज्ञानेश्वर ने तो सारे भारतवर्ष का भ्रमण किया, ज्ञानेश्वरी सारे मनुष्य आत्माओं को सुनाई और पसायदान मांगा, परमात्मा से प्रार्थना मांगी कि सारा सुख शांतिमय विश्व हो। लेकिन जब उन्हें संजीवन समाधि लेने की थी तो वो आळंदी में ढूंढ रहे थे जगह कि मैं कहाँ संजीवन समाधि लूँ, अभी मेरा काम पूरा हुआ है, अभी ये मेरा पसायदान का संकल्प कौन सिद्ध करेगा। तो आळंदी में घूमते घूमते अनेक झाड़ों के बीच में एक कलश दिखाई दिया, वो सिद्धेश्वर का मंदिर था। वहाँ नज़दीक गए और उन्होंने संकल्प किया कि मेरा पसायदान का संकल्प सिद्ध करने की ताकत ये सिद्धेश्वर में है। तो इस सिद्धेश्वर के साथ कनेक्शन उन्होंने रखा।
लेकिन आज आळंदी में जाओ तो जहाँ तहाँ ज्ञानेश्वर की बात चलती है, सिद्धेश्वर को कोई पूछता भी नहीं है। तो हमारा कनेक्शन जो है वो मेन पावर हाउस से क्या हो गया है, कट हो गया। अभी पिछले वर्ष हम शिरडी के साईं बाबा को गए थे, हज़ारों लोग, 100 वर्ष पूरे हुए, संवत्सरी थी, हज़ारों लोग रोज आते थे। तो हमने भी उनको पूछा कि भाई 6-7 हज़ार लोग आप साईं बाबा का दर्शन करने के लिए आते हो, तो क्या करते हो? साईं बाबा के पाँव पर सर पटकते हैं, साईं बाबा के पाँव पर सर पटकते हैं। लेकिन आज ऐसा टाइमिंग है कि अभी साईं बाबा के पाँव मत देखो, साईं बाबा ने अंगुली कहाँ किया है? सबका मालिक एक करके ऊपर अंगुली किया है ना, तो अभी उसको देखो, क्योंकि वो दाता है, बाकी सारे लेने वाले हैं। समझा? बाकी सारे लेने वाले हैं, दाता एक ही है। और वो परमात्मा आपको फिजिकली भी परफेक्ट करेगा, मेंटली भी परफेक्ट करेगा, सोशली भी परफेक्ट करेगा। मनुष्य का भाग्य जो है वो तन के ऊपर आधारित होता है, मन के ऊपर आधारित होता है, धन के ऊपर आधारित होता है और जन के ऊपर आधारित होता है। ये चारों भी परफेक्ट चाहिए, तभी मनुष्य सुख और शांति में बन सकता है। तो इस प्रकार से चारों प्रकार का भाग्य आप अपने जीवन में प्राप्त करो। और यही शुभ संकल्प हम करते हैं कि आप जगदम्बा के प्रांगण में आप आए हो तो जरूर आपके जीवन में सुख शांति प्राप्त हो, आपको ईश्वरीय ज्ञान का मार्ग भी उपलब्ध हो और भविष्य में आने वाली सभी समस्याओं को आप सहज रीति से सामना करके विजय प्राप्त करो। अच्छा, ओम शांति। Thank you, Dashrath Bhai ji, for sharing such a beautiful inspiration with us. And we now coming to the closure. And for that, I would like to invite Dr. Sushma Lad to deliver the closing address. I would like to invite you to come to the stage. She is presently working as consultant pathologist and lab director at Krishna Diagnostic, Koth Road. She follows Brahma Kumaris lifestyle and devotes her services at Global Hospital Mount Abu regularly. She has done PG Diploma in Value in Healthcare and MSc in Counseling and Spiritual Health conducted by Brahma Kumaris Education Wing. She is Vihasa facilitator. She is an active on IMA forum and lifetime IMA member of Pune branch. So I would like to invite Sushma Lad. Om Shanti. Thank you, Dharti Ben, for nice introduction. I feel myself privileged to have this opportunity of giving vote of thanks. First of all, I would like to say a few words about Indian Medical Association. IMA is an organization active all over India. IMA is a democratic forum working to maintain dignity, honor, and social security of all medical fraternity in the country. It strives to provide quality healthcare to each and every citizen of India. IMA is and committed to preserve the autonomy of profession. IMA has membership of more than 3.5 lakh doctors all over in 28 state branches. My sincere thanks to IMA Pune President Dr. Meenakshi Deshpande for taking initiative to organize this program at Jagdamba Bhawan. I thank to IMA Secretary Dr. Alka Kshirsagar ma'am as well as entire IMA Pune team. I thank Sarita Didi for her nice introduction about Medical Wing Brahma Kumaris. I really appreciate BK Dr. Sachin Parab for taking time out of his baseline mode by Jagdamba Bhavan team from tomorrow. So everyone can benefit from this meditation course sessions. As all of you have made aware by all our eminent speakers, regular practice of Raj Yoga brings positivity and peace in our life. Supreme Lord Shiva is father of all souls. When we start doing Raj Yoga meditation, he gets connected to us by all relations.
God Shiva is bounded to us by relationships like he become our guide, our supreme teacher, our mentor, our father, and a very close friend. Believe me, you experience the same feeling as a child holding its mother's hand and walking without fear. So please connect with your Khuda Dost, Shiv Baba. Thank you. Om Shanti. Thank you, Dr. Shishmala. Yes, please. And before Dr. Meenakshi comes to the stage, if you have any feedback related to this program, you can email us on imaofpune@gmail.com. imaofpune@gmail.com. I would like to welcome Dr. Ravindra Kute sir, President-elect of Maharashtra State from IMA Pune quarters. Welcome sir. And that was a very thoughtful speech given by him. And at the last, I would like to thank all the Brahma Kumaris and Sunanda Didi, Dr. Sushma Lad and Sheetal Ben, she's here, for organizing this in a very excellent manner. And a last and a beautiful message, it's not my poem, but a beautiful message for all the doctors, paramedical workers, healthcare workers from my side. I will end this program with this poem. If you think you are beaten, you are. If you think you dare not, you don't. If you like to win but still think you can't, you won't. If you think you will lose, you are lost. If you think you are outclassed, you are so. Forever out in this world, you will find that success begins in a fellow's mind. So for Dr. Parab, battles always do not go to the fastest or the strongest man. Sooner or later, the one who wins is the one who thinks he can. So thank you all for a wonderful get-together. So once again, I would like to thank all the dignitaries and everyone present here for making this program possible. And I think I was just thinking that we should even thank the nature, because today it's a beautiful out there, the sun out there. So yes, thank you everyone. And now we'll proceed for lunch. So the lunch is served in the basement. So enjoy your rest of the time at Jagdamba Bhawan. Om Shanti. We can have 1 minute of silence and then we finish. So after 1 minute of meditation, if the doctors can come on the stage, we will have a photograph session.